सो नमस्कार समस्त को जय जगन्नाथ। नमस्कार समस्त को जय जगन्नाथ जय मां समले। आशा कर समस्त भल थे, आपन प्रिपरेशन भल चलती। फाइनाली आम आरंभ करा जाऊँ आमर गोटे इम्पोर्टाट सेशन को। ओके चलो आरंभ करिया। ओके तो मुझे कौन करी धीरे 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 एवं तो नुह धीरे 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 आपणकर आम 6 मास रु वर्षे जाए करेन्ट अफेयर्स को माड़ी माड़ी चलवा है। 6 मास रु वर्षे जाए करेन्ट अफेयर्स को माड़ी माड़ी चलवा। कम्प्रिहेन्सिव वे गोटे वर्ष करेन्ट अफेयर्स को एत थर रिविजन करेंगे आपर कि से ही मेजर क्वेश्चन आपर परीक्षा आसो है। तो जेहेतु सेसन टी आपर मुझे 6 मास 4-5 मास आज मेजर कभर करेबी माने जून जुलाई जून मे एप्रिल यही 4 मासटा इम्पोर्टाट माने आपंकर आगू को एग्जाम हम से ही 6 मास 8 मास करेन्ट अफेयर्स पढ़ा जाऊँ आगू है। बाकी आम ट्राए करवा कि आपंकर अक्टोबर नवेम्बर एग्जाम बेलू आम 1 ईयर केमती करेन्ट अफेयर्स को कभर कर। ठीक अच्छे चलतु प्रथम प्रश्न आम देखा। मिशन क्वीन पाइनएप्पल वाज लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? तो ध्यान रखना त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। आप त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड? आपंकर मत कहूँ ऑथर किए इंडिया बुक आमर इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड ऑथर किए? तो आंसर कौन है आपंकर के अरुमुगम इज द करेक्ट आंसर। के अरुमुगम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द जानेट जन्सा हैज बीन इलेक्टेड। ओके हाँ एबे 4-5 मास 6 मास मुझे कभर करेबी। धीरे धीरे सी 8 मास जीव 9 मास जीव वर्षे हो मुझे कंटेंट बनैबा आरंभ करुच्ची। प्रति मासर इंपोर्टाट 100टा क्वेश्चन को मुझे अलग करी से क्वेश्चन को आम बारंबार रिविजन करवा किसी करवानी है। वर्षकर माने बुझीपार तो 1200 क्वेश्चन केते समय लगे जान गोटे दिन 12 घंटा सेसन बोधे पलि मत लगुच गोटे दिन 12 घंटा सेसन नवा आ कौन है। ठीक अच्छे तो जानेट जन्सा हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री? तो आंसर कौन है स्लोवेनिया इज द करेक्ट आंसर है। स्लोवेनिया इज द करेक्ट आंसर। मत मन पड़ा मत कहूँ आम आर्मी चीफ किए एयरफोर्स किए और नेवी चीफ किए कहूँ आर्मी एयरफोर्स नेवी 3 जन जाक चीफ कहूँ एयरफोर्स नेवी CDS ये 4टा चीफ ना मत कहे आप कमेंट सेक्शन में 4टा जिन आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव आर्मी एयरफोर्स नेवी और CDS 4 जन जाक बहुत इंपोर्टेंट है। तो ये 4टा पर आपर आउ गोटे जिन आपंकर अच्छी जमती कि आपर रिसेंटली छाड़ू रिसेंटली आप एजुकेशन मिनिस्टर बदलिले नाटा कौन बहुत ही गुलगुलिया प्रश्नटा किंतु एटा भी प्रश्न परीक्षा आसीपर एजुकेशन मिनिस्टर बदल एजुकेशन मिनिस्टर ना कौन? ओके राइट आगू बढ़िया। ओके हाँ आर्मी रो चीफ किए धीराज सेठ एयरफोर्स रो AP सिंह नेवी चीफ आपंकर कृष्ण स्वामीनाथन CDS आपंकर राजा सुब्रमण्य। ओके CDS किए राजा सुब्रमण्य। तापर आसीबा ही बिगन हिज 4th टर्म एज प्राइम मिनिस्टर लीडिंग 5 पार्टी सेंटर छाड़ती आगू गला कि आप 2026 क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल जीति हु ऑन द 2026 क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल किए जीति व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो आंसर कौन आप श्रेय पारिक इज द करेक्ट आंसर। कौन है श्रेय पारिक इज द करेक्ट आंसर जे कि 2026 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल जीति। नेक्स्ट देखिए श्रेय पारिक 14 ईयर ओल्ड श्रेय पारिक फ्रॉम आपंकर रांचो कुकामोंगा स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल जीति। वार्डटा कौन आपंकर ब्रोमोक्रिप्टाइन वार्डटा कौन आपंकर ब्रोमोक्रिप्टाइन। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट ऑपरेशन चक्रव्यूह आपंकर किए कंडक्ट करिसन मत कहूँ? ऑपरेशन चक्रव्यूह वाज कंडक्टेड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो किए करछ आपंकर डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टरेट ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस इज द करेक्ट आंसर। सेशन को समस्त टिके शेयर कर दियंतु एडमिन जो माने अछंती किंबा आपण सांग साथी मान सहित सेशन को टिके समस्ते शेयर कर दियंतु जमनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम पिला माने सेशन संगे जोड़ी होई परिबे हला। तो जीवा द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड ट्रॉमा केयर एज पार्ट ऑफ व्हिच फंडामेंटल राइट? द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली
recognize trauma care as a part of each fundamental right. तो आंसर वाला आर्टिकल 21 is the correct answer. Right to life and personal liberty हला right to लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपण मानकर देखंतु सुप्रीम कोर्ट एटी रिसेंटली रिकॉग्नाइज करछि ट्रॉमा केयर को को फंडामेंटल राइट सहित आर्टिकल 21 सहित. नेक्स्ट देखिबा अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ द इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ द इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट डिजिटाइज्ड इकोनॉमीज. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज इंडियाज रैंक among the world's most digitized economy. तो आंसर वाला 5th इज द करेक्ट आंसर. कहा हिसाब रे आपन स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट हिसाब रे. नेक्स्ट देखिबा व्हिच इंडियन वाज ऑनर्ड एज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. व्हिच इंडियन वाज ऑनर्ड एज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एज द FAO सॉइल फार्मर हीरो इन मे 2026. तो आंसर कोन आपन वल्लुवन नाटा बहुत इंपोर्टेंट. वल्लुवन नाटा मन रखिबे. वल्लुवन नाटा मन रखिबे. को इंडियन आपन ऑनर होइचंती फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सॉइल फार्मर हिसाब रे. सॉइल फार्मर हिसाब रे का गोटी कराई जानि परले हला. तापर आगु बढ़िबा. ओके तापर हम आगु देखिबा. नेक्स्ट कहूछ आपन देखंतु. नेक्स्ट कोन कहला? नेक्स्ट कहला व्हाट इज द थीम ऑफ द 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा रा थीम टा मते कहि दियंतु. तो आंसर कोन योगा फॉर हेल्दी एजिंग इज द करेक्ट आंसर. योगा फॉर हेल्दी एजिंग इज द करेक्ट आंसर. ओके ठीक अच्छे. देन देखिबा. देन आपनकर कोन कहूची सुमन कल्याणपुर. सुमन कल्याणपुर रिसेंटली पास्ड अवे was associated with which field? Suman Kalyanpur, who recently passed away, was associated with which field? Politics, sports, singing and journalism. What is the correct answer? What answer kala singing is the correct answer. Suman Kalyanpur आपनकर recently pass away कर जाइछंती को field सहित associated? Singing सहित associated. Which Indian badminton players? Which Indian badminton players won the Singapore Open 2026 men's double title? Which Indian badminton players won the Singapore Open 2026 men's double title? तो ध्यान सकना आपनकर सात्विकराज रानिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी इज द करेक्ट आंसर. सात्विकराज रानिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी इज द करेक्ट आंसर. हला आपनकर क्रिएट करछन हिस्ट्री बाय विनिंग द मेंस डबल टाइटल एट द सिंगापुर ओपन 2026. व्हाट इज द न्यू बेस ईयर ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स? व्हाट इज द न्यू बेस ईयर ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स? दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. मु गारंटी दे कहूची परीक्षा रे प्रश्नटा आसीबो ही आसीबो. हला मते कहले आपनकर होलसेल प्राइस इंडेक्स रो न्यू बेस ईयर कोटा? होलसेल प्राइस इंडेक्स रो न्यू बेस ईयर होची 2022-23 आपनकर कोन 2022-23 आपनकर WPI रो न्यू बेस ईयर आपनकर. नेक्स्ट देखिबा व्हिच इंडियन टीचर वन द ग्लोबल कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026? व्हिच इंडियन टीचर won the global Cambridge dedicated teacher award 2026? तो आंसर करना आपनकर सोमा मंडल इज द करेक्ट आंसर. सोमा मंडल फ्रॉम द GD गोयनका पब्लिक स्कूल won the global Cambridge dedicated teacher award 2026 and she became the first Indian teacher to win the overall global title after securing 40% of the public vote among regional winners worldwide. hala next देखिबा what is the name of the initiative launched by MISO and Bombay Stock Exchange for MSME? what is the name of the initiative launched by MISO and Bombay Stock Exchange for MSME? तो आंसर करना प्रोजेक्ट शिखर इज द करेक्ट आंसर. कौन है गला? प्रोजेक्ट शिखर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. According to prison statistic report, according to prison statistics report, which state or UT recorded the highest prison occupancy rate in 2024? मारे कहंतु prison statistics report हिसाब रे को स्टेट और UT highest prison occupancy rate को एठी मेंटेन करछि 2024 रे माने सबुठो अधिका जेल रे जमान रहिचंती. तो आंसर गला दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. According to recent report, India overtook which country to become world's second largest solar market in 2025? According to recent report, India overtook which country to become world's second largest solar market in 2025? तो आंसर करना United States is the correct answer. United States is the correct answer. Next question देखिए. Who edited the book When Audit Matters, 𝐂𝐃 Intervention That Made a Difference? प्रश्न पचलला. Who edited the book When Audit Matters, 𝐂𝐃 Intervention That Made a Difference? तो आंसर करना विनोद राय is the correct answer. विनोद राय इज द करेक्ट आंसर. ओके तापर नेक्स्ट देखिबा. नेक्स्ट आपनकर कहूची मेटे प्रेडिक्शन हैज बीन अपॉइंटेड री-इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री? ए पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष जनक कहार एठी आपनकर प्राइम मिनिस्टर बनिचंती? ट्राई टू आंसर. कहिबे जल्दी जल्दी कहिबे.
ओके चलते आगे बढ़ा तो मेटा प्रेडिक्शन आपनकर हैज बीन अपॉइंटेड इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज कंट्री तो कंट्री ना कौन है डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर कौन है डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर है तो मेटा प्रेडिक्शन सिक्योर्ड ए थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क बाय फॉर्मिंग ए न्यू सेंटर लेफ्ट फोर पार्टी माइनॉरिटी कोalition गवर्नमेंट नेक्स्ट देखिबा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई रो नुआ चेयरपर्सन की एठी अपॉइंट हेचन मते कह दियंतु तो आंसर कोन आपनकर मते कहंतु लोखंडे प्रशांत सीताराम इज द करेक्ट आंसर लोखंडे प्रशांत सीताराम इज द करेक्ट आंसर सीनियर आईएएस ऑफिसर लोखंडे प्रसाद सीताराम आपनकर अपॉइंट हेचन न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सीबीएसई ओके नेक्स्ट देखिबा बाल्टॉप्स 2026 एक्सरसाइज बाल्टॉप्स 2026 एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज व्हाट इज द करेक्ट आंसर Baltops 2026 exercise is conducted in which sea तो ये आंसर करना आपनकर Baltic Sea is the correct answer एटा कहार गोटे एक्सरसाइज यूएस लेड मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज अमेरिका द्वारा करा होतबा मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज गोटे होचे कोन बाल्टॉप एक्सरसाइज ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा द कैरी मी ब्लैक पॉलिसी आश्च माने मत नै की जाओ द कैरी मी ब्लैक पॉलिसी आपन मानकर हैज बीन लॉन्च्ड एट व्हिच पिलग्रिमेज साइट व्हाट इज द करेक्ट आंसर कैरी मी बैक पॉलिसी आपनकर कोडी एचे आपनकर केदारनाथ इज द करेक्ट आंसर द कैरी मी बैक पॉलिसी हैज बीन लॉन्च्ड at the Kedarnath by the Kedarnath Nagar Panchayat and the initiative aims to reduce plastic and dry waste generated during the Char Dham Yatra. Next देखिबा the recently concluded Maven mission of NASA was associated with which planet? The recently concluded Maven mission of NASA was associated with which planet? The planet na hoch kono Mars is the correct answer. Okay. NASA officially ended Maven Mars Atmosphere and Volatile Evolution mission after permanently losing contact with its spacecraft okay jiba agu padiba what is the name of the operation launched by Gujarat Police against Bangladeshi national residing illegally in the state what is the name of the operation launched by Gujarat Police against Bangladeshi nationals residing illegally in the state so answer kanala operation Delta Hunt is the correct answer Operation Delta Hunt is the correct answer. Next question देखिबा Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary which has been designated as the 100th Ramsar site. JP Narayan Bird Sanctuary को 100 Ramsar site declare करा गला 100 Ramsar site रो मोर आउट प्रश्न मने पड़ला एठी आपनकर 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोटा मते कहि दियंतु हला 44th थिला आपनकर मराठा मिलिटरी लैंडस्केप 43rd थिला आपनकर चारदियो मैदान कोन थिला चारदियो मैदान थिला हला ता पछकु तो मो फेरि की जाउनी लास्ट तीनटा मोठे आपनकर मने पकि कहूची आपन मानको पई हां एटा थिला आसाम रे एटा थिला महाराष्ट्र रे एटा थिला यूपी रे हला 45th होची सारनाथ रो एंशिएंट बुद्धिस्ट टेंपल बुद्धिस्ट साइट्स ओके 45th जोटा को मो कहूची आपन मानकर जय प्रकाश नारायण बर्ड सैंक्चुरी व्हिच हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 100th रामसर साइट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट द स्टेट ना कणाला यूपी इज द करेक्ट आंसर देश देखिबा Which company launched the India's first flex fuel passenger vehicle? Which company launched India's first flex fuel passenger vehicle? Tata Motor, Mahindra and Mahindra, Maruti Suzuki and Hyundai. तो आंसर वाला Maruti Suzuki. हाँ fast flex fuel माने E100, ethanol 100, complete ethanol रे ही चलिबो गाड़ी. हैला. Right, UNESCO was okay. Extra जिनस तो कोई साल ना तो मैं देखियो पिकॉन एक्स्ट्रा जिनस कोच हम लिखी ना नोट करके समझता है ना. हाँ. तो ये E22 E100 इथानॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ई 20% नो 100% इथानॉल रे गाड़ी चलीबा आपण कराबे हैला राइट इथानॉल को 100% मिसा जिवो का संगे हमर पेट्रोल संगे मिसा जिवो सबटो हाईएस्ट रामसर साइट होची इंडिया रे तापरे तमिलनाडु रे तापर आपन यूपी रे ओडिशा बिहार पंजाब ओडिशा रे 6 रामसर साइट अछि ना ओडिशा रे 6 रामसर साइट अछि बिहार रे केतरा अछि को देखिबो टिके हला ओके हीरो टू व्हीलर बाइक बाहर करिछि फ्लेक्स फ्यूल बाइक हो ठीक अछि चलो तो किए बाहर करछि आपण जानि पाले मारुति सुजुकी जानले एठी आपण मानकर मारुति सुजुकी हीरो बाहर करछि फ्लेक्स बाइक तो माने कहउछ डन देन देखिबो रिसेंटली व्हिच इंडियन आर्मी ऑफिसर वन द बीरेर ब्रुक्स अवार्ड इन द जनरल डॉगलस मैकार्थर military leadership writing award in the USA recently
Which Indian Army officer won the Bearer Brooks Award and the General Douglas MacArthur Military Leadership Writing Award in the USA? तो आंसर करना Major Prabhat Mishra is the correct answer. Major Prabhat Mishra is the correct answer. Next देखिए World Environment Day is observed every year on which day? World Environment Day प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए? जून 2, जून 3, जून 4, जून 5. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आपन केबे ऑब्जर्व करा जाए? जून 5 रे ऑब्जर्व करा जाए. केबे? जून 5 रे ऑब्जर्व करा जाए. हला अब ए वर्ष थीम ता मते की कहि परिबे कि इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर. इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर होचे एथर नेशनल एनवायरमेंट डे रो थीम आपन मानकर एटा जून 5 रे. अच्छा जून 5 रे मन पड़ला जून 21 रे हम कोन ऑब्जर्व करंती? जून 21 रे माने योगा डे ऑब्जर्व करंती. डिसेंबर 21 रे हम कोन ऑब्जर्व करंती मते कोंदो? मेडिटेशन डे ऑब्जर्व करंती. यस और नो? हला डिसेंबर 21 में मेडिटेशन डे ऑब्जर्व करते. तापर हम आसीबा व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द ऑल वुमेन सिंगापेन. व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द ऑल वुमेन सिंगापेन स्पेशल फोर्स. लायनेस स्पेशल फोर्स आपनकर को स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करछि मते कोंतो? तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर. सी जोसेफ विजय जे आपनकर सीएम अछन तमिलनाडु रो से कोन करछन लॉन्च करछन ऑल वुमेन सिंगापेन स्पेशल फोर्स आपनकर लॉन्च करछन. हला देन देखिबा अकॉर्डिंग टू द सिप्री ईयरबुक 2026 अकॉर्डिंग टू द सिप्री ईयरबुक 2026 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मिलिटरी स्पेंडिंग इन 2025? अकॉर्डिंग टू सिप्री ईयरबुक 2026 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मिलिटरी स्पेंडिंग 2025? तो आंसर करना 5th इज द करेक्ट आंसर. हला द सिप्री ईयरबुक 2026 रिपोर्टेड दैट इंडिया was the world's 5th largest military spender in 2025. India's military expenditure was 92.1 billion, an increase of 8.9% over the previous year. Which country topped the medal tally at the World Yogasan Championship 2026? Which country topped the medal tally at the World Yogasan Championship 2026? तो आंसर करना India is the correct answer. आंसर करना India is the correct answer. Okay. So the inaugural World Yogasan Championship 2026 was held at Eka Arena, Ahmedabad from 4 to 8 June 2026. Exercise Peace Black is hosted by which country? Exercise Peace Black को country द्वारा host करा होच मते को? Exercise Peace Black अपन मानकर ऑस्ट्रेलिया द्वारा होस्ट करा होच. का द्वारा करा होची? ऑस्ट्रेलिया द्वारा करा होच. हला एटा गोटे आपनकर बाइनियल मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज. बाइनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज अपन मानकर गोटे. हला नेक्स्ट देखिबा Who are the authors of the book Agatya the Unifier? Who are the authors of the book Agatya the Unifier? कौन तो ये आंसर कौन अब देखिए अगर आंसर ठीक कहउछंती. तो ये आंसर कौन आपन कर देखंतु समा भट्ट एंड डॉक्टर एमएन सुधा. समा भट्ट एंड डॉक्टर एमएन सुधा. ठीक अछि चलन आगु बढ़िबा. प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहि तो देलियो कोन जीआईबी. प्रोजेक्ट जीआईबी अपन मानकर कहा पई एटा न्यूज रे थिला को स्पेसिस पई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पई न्यूज रे थिला जीआईबी. द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज सक्सेसफुली हैज्ड 3 chicks of the great Indian bustard, increasing the captive conservation population को 94 बार को बढ़ाइछि. हला यार आयुष्मान स्टेटस मते के कहि परिबे? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रा आयुष्मान स्टेटस के कहि परिबे? क्रिटिकली एंडेंजर्ड. हला क्रिटिकली एंडेंजर्ड भाई ये टिके पट से हेले ये दुनिया रो शेष. नेक्स्ट क्वेश्चन कहउछि द सी बॉक्स पोर्टल. द सी बॉक्स पोर्टल was launched by which ministry? The सी बॉक्स पोर्टल मानकर कहा द्वारा लॉन्च हेछि मते कोंतु? लॉन्च बाय which ministry? Minister of Home Affairs, Minister of Women and Child Development, Minister of Social Justice and Empowerment, Minister of Labor and Employment. और कौन है आंसर मते कोंतु? The सी बॉक्स पोर्टल अपन मानकर launched by which ministry? The Ministry of Women and Child Development is the correct answer. Ministry of Women and Child Development is the correct answer. ठीक अछि. नेक्स्ट देखिबा. नेक्स्ट अपन कोन कहउछि? नेक्स्ट अपन कहउछि the Mombasa Declaration. The Mombasa Declaration recently adopted by 15 countries aims to combat which issue? The Mombasa Declaration recently adopted by 15 countries aims to combat which issue? तो आंसर करना illegal fishing is the correct answer. कौन है गला? Illegal fishing is the correct answer. The recently 15 countries from Africa, Asia, Europe and the Caribbean and the Pacific adopted the Mombasa Declaration to strengthen global efforts against illegal, unreported and unregulated fishing. Hello, Jiba. Next देखिबा. Who has been appointed as the new chairperson of the National Statistical Commission? Who has been appointed as the new chairperson of the National Statistical Commission? Dr. Madhavan Mukund, Professor Subhabrata Das, Dr. Saival Chattopadhyay and Satyendra Bahadur Singh. तो कौन आंसर है जीवो? डॉक्टर सैवल चट्टोपाध्याय इज द करेक्ट आंसर. जे कि नोआ चेयरपर्सन बनी चंदी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमिशन रो.
नेशनल स्टैटिस्टिकल कमिशन रो नुआ चेयरपर्सन बनी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोची व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 मंगोलिया काजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024 तो आंसर कौन होगा मंगोलिया इज द करेक्ट आंसर है मंगोलिया इज द करेक्ट आंसर रिसेंटली एन इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्टेड टू पार्टिसिपेट इन खान क्वेस्ट कोठी मंगोलिया रे मंगोलिया रे कैपिटल कौन उलान बातर मंगोलिया संगे आपनकर आउ कोन एक्सरसाइज अछि मते कोंतु नोमैडिक एलिफेंट कोन अछि नोमैडिक एलिफेंट भी आपनकर मंगोलिया संगे अछि मन पडुछ ना मन पडुनी हां ना छोडा आउतर मन पकेबी मन पडुछ दी नोमैडिक एलिफेंट का संगे मंगोलिया संगे व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026 हेल्ड इन आगरा व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026 हेल्ड इन आगरा तो आंसर है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर हेलो द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल recently in news is headquartered in which city the world gold council को जगह यार हेडक्वार्टर मत कहि दियंतो हेडक्वार्टर कोन हला लंडन इज द करेक्ट आंसर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल आपनकर कोठी लंडन नेक्स्ट देखिबा which indian jurist was elected as the judge of the international tribunal for the law of the sea it loss which indian jurist was elected as the judge of the international tribunal for the law of the sea for the year 2026 to 2035 term तो कोन एटा आंसर हिजबो एटा आंसर हिजबो बिमल एन पटेल इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा द तृष्णा सैटेलाइट मिशन is a joint initiative between India and which country? The Trishna satellite mission is a joint initiative between India and which country? France, Germany, Australia and Russia. What is the correct answer? The Trishna satellite mission. तो आंसर कौन है? France is the correct answer. Prime Minister Narendra Modi announced that India and France will jointly launch the Trishna satellite in 2027. कौन पे ग्लोबल वाटर और फूड सिक्योरिटी को एठी कंट्रोल करिया पे हला त्रिशना सैटेलाइट मिशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच स्टेट इज द होम टू लखनपुर कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट प्रश्न पचलला व्हिच स्टेट इज होम टू लखनपुर कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट फैसिलिटी को स्टेट इट होम टू लखनपुर कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट फैसिलिटी तो आंसर है ओडिशा इज द करेक्ट आंसर द गवर्नमेंट रिसेंटली announced the launch of 25,000 कोटी टंकार लखनपुर कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट एट लखनपुर झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन वज्रपात व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन वज्रपात दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन वाराणसी उत्तर प्रदेश तो कौन उत्तर कोंतु व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन वज्रपात that was recently launched in Varanasi Uttar Pradesh तो ध्यान सकना आपनकर dismantle criminal network and their digital presence dismantle criminal network and their digital presence next देखिबा the Supreme Court recently held that the right to walk on a demarcated footpath is protected under which article of the constitution what is the correct answer right to walk on the footpath केते नंबर आपनकर फंडामेंटल राइट संगे एठी आपनकर रिजेंबल करूची तो आर्टिकल 19(1) क्लॉज डी आर्टिकल 21 राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बुझी पाले नेक्स्ट देखिबा व्हिच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सोवरेन रिटेल ट्रेजरी सुकुक व्हिच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सोवरेन रिटेल ट्रेजरी सुकुक प्रोग्राम for retail investors Saudi Arabia, Qatar, UAE and Bahrain. What is the correct answer? Which country has launched its first sovereign retail treasury sukuk program for retail investors? तो आंसर करना अपन करे UAE is the correct answer. United Arab Emirates is the correct answer. Okay? याडे क्लास याडे फोन धरी की ब्रेकफास्ट करे को जाओ फोन धरी की ब्रेकफास्ट करे को जाओ सेमिन नो हला ओके आगु बढ़िबा नेक्स्ट देखिबा The United Arab Emirates has launched its first ever sovereign retail treasury sukuk program. Next देखिबा Project Super 50. Project Super 50. A civil services examination guidance program was launched by which organization? Project Super 50. A civil services examination guidance program was launched by which organization? तो ध्यान सकना अपना National Commission for
Schedule caste is the correct answer. National Commission for Schedule Caste is the correct answer. Next देखिबा, which Indian has been selected as the Vice President of the Financial Action Task Force for the 2026-27 term? What is the correct answer? Which Indian has been selected as the Vice President of the Financial Action Task Force for the 2026-27 term? So the answer कौन है? विवेक अग्रवाल is the correct answer. Vivek Agarwal is the correct answer. India's senior bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the Vice President of the Financial Action Task Force. He will be succeeded Giles Thompson of the United Kingdom. Okay, चलो आगू देखिबा. Who has become the first person of the Indian origin to receive the Wolf Prize in Physics? Who has become the first person of Indian origin to receive the Wolf Prize in Physics? तो आंसर कौन है? अपना Janendra K. Jain is the correct answer. Janendra K. Jain is the correct answer. Next question देखिबा. Who is the author of the book IIT, the story of India's most prestigious educational ecosystem? What is the correct answer? Who is the author of the book IIT, the story of the India's most prestigious educational ecosystem? तो आंसर कौन है? अपना मत कहूँ तो प्रभात कुमार is the correct answer. कौन है? प्रभात कुमार is the correct answer. हेलो नेक्स्ट देखिबा. नेक्स्ट आपन कहूँ योगांध्रा. योगांध्रा 2026 is a flagship mass yoga initiative launched by which state government? ना जेमिति तार स्टेट ना भी सेमिति. योगांध्रा आपण मानकर कहार गोटे एक्सरसाइज मते कहंतु. योगा एक्सरसाइज आंध्र प्रदेश मासिव योगा इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश करै छ. आपण रेडी जनस आंध्र प्रदेश सीएम के अछंती? चंद्रबाबू नायडू. आंध्र प्रदेश गवर्नर के अछंती? आपण एस अब्दुल नाजिर. आंध्र प्रदेश डेप्यूटी सीएम के अछंती? आपण मते कहंतु पवन कल्याण अछंती. हला पवन कल्याण गारू अछंती. नेक्स्ट देखिबा. At the Asian Relay Championship 2026, the Indian women's 4x100 meter relay team secured which medal? What is the correct answer? At the Asian Relay Championship 2026, the Indian women's 4x100 meter relay team secured which medal? तो ध्यान रखना, gold medal is the correct answer. The Asian Relay Championship रे अपन gold medal देखिए को मिली. Next question देखिए. India won the FIH Hockey Women's Nations Cup. India won the FIH Hockey Women's Nations Cup 2025 and 2026 by defeating which country in the final? को कंट्री को फाइनल रे हरै कि इंडिया एठी आपण मानकर मते कोन तो कपटा जीति छि. तो आंसर कोन होला? आपण न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर. न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर. बुझी पारले? न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिबा. व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा रो थीम कोन मते कहिबे? योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर पीस, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन. तो एठी कोन होइबो? योगा फॉर हेल्दी एजिंग इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिबा. जोनाथन recognized as the world's oldest known terrestrial animal currently lives on which island? जोनाथन आपन गोटे कइंछ जोटा कि दुनिया रे सबटु ओल्डेस्ट सबटु पुराना स्पीसीज हिसाब रे कोउठी देखिया को मिलुछ आपन को गेबे? सेंट हेलिना रे देखिया को मिलुछ. कोड देखिया को मिलुछ? सेंट हेलिना. केते वर्ष बयस? 194 वर्ष बयस. का को? जोनाथन को. कोड देखिया को मिलुछ? सेंट हेलिना रे देखिया को मिलुछ. नेक्स्ट देखिबा. हेलो जिबा. नेक्स्ट कहूची. What is the rank of India in the Energy Transition Index 2026 released by World Economic Forum? Energy Transition Index रे इंडिया रैंक केते जोटा कि रिसेंटली आपन को रिलीज हेछि. आपन को एठी आंसर कोन हेगला? 78th इज द करेक्ट आंसर. 70 नंबर रैंक. इंडिया रैंक केते? 70 नंबर. नेक्स्ट देखिबा. Who was honored as the best male athlete of the year at the Indian Athletic Award 2025 ceremony? मते कोन तो किए एठी ऑनर हेचंती बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर एट द इंडियन एथलेटिक अवार्ड 2025 सेरेमनी. तो नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर. कौन है? नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. अकॉर्डिंग टू द UNCTAD report, which country has become the world's top sheep recycling nation in 2005? हेलो 2025 सॉरी. According to the UNCTAD report, which country has become the world's top sheep recycling nation? तो आंसर करना आपन को इंडिया इज द करेक्ट आंसर. इंडिया इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. द मेला खीर भवानी. The Mela Kheer Bhavani festival is mainly celebrated in which state or UT? Try to answer. ओहो प्रबल ब्लर होची की. लाइट को बंद कर देले हबो मत लागुछ. एबे भी ठीक अछि.
जम्मू एंड काश्मीर इज द करेक्ट आंसर एटा कम व्हाइट होचे एटा अधिक टिके व्हाइट होतला लाइटिंग तो ठीक अछि रूम रे करेक्ट ओके हाँ मु गोरा हो गली फेयर एंड लवली लगे दिल तो टे गोरा हो गली है जानले आपनकर जम्मू एंड काश्मीर इज द करेक्ट आंसर जम्मू एंड काश्मीर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा आगु जिबा व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर फॉर इंप्रूविंग क्राइम डाटा एक्सेस फॉर पुलिस व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर फॉर इंप्रूविंग क्राइम डाटा एक्सेस फॉर पुलिस क्राइम ट्रैक ऐप अभिज्ञान ऐप ई पुलिस ऐप एंड भारत क्राइम ऐप तो ध्यान से आपनकर अभिज्ञान ऐप इज द करेक्ट आंसर हला अभिज्ञान ऐप इज द करेक्ट आंसर ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिबा कलमकारी पेंटिंग दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड कलमकारी पेंटिंग आपनकर का साथ एसोसिएटेड तो आंसर कौन है आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर कलमकारी पेंटिंग नेक्स्ट देखिबा हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 2026 हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 2026 तो आंसर कौन है आपनकर तुषार मेहता इज द करेक्ट आंसर कौन है गला तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल बन जने आपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली proposed the creation of these districts Basirhat, Sundarban, Jangipur and Arambagh कि आपनकर को स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली प्रपोज करिछि आपनकर ए डिस्ट्रिक्ट गुडा को तो आंसर कौन है वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर हला वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा अकॉर्डिंग टू द 𝐀𝐋 स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द 𝐀𝐋 स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2024-25 which state spent the highest amount of energy subsidies in 2024-25 according to the 𝐀𝐋 स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट आपनकर आंसर राजस्थान इज द करेक्ट आंसर राजस्थान इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द डेमोक्रेसी कौन हम नवम रेबिया इज द करेक्ट आंसर नवम रेबिया इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द रिसेंटली रिलीज्ड बुक संस्कृतिर रत्न भंडार द रिसेंटली रिलीज्ड बुक संस्कृतिर रत्न भंडार वावियर इतिवृत्तो इज एसोसिएटेड विथ व्हिच फोक म्यूजिक डांस तो आंसर कौन आपन भवाई इज द करेक्ट आंसर भवाई इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना गोटे को स्टेट रा स्कीम मते कहि दियन देखा के आंसर ठीक कहउछन मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना आपनकर को स्टेट रा गोटे स्कीम मते कहि दियंतु तो से स्टेट ना कौन यूपी इज द करेक्ट आंसर हला तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना आपनकर यूपी रो गोटे स्कीम नेक्स्ट देखिबा व्हिच कंट्री जॉइंड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आज इट्स 27th मेंबर इन जून 2026 व्हिच कंट्री ओके ठीक अच्छे जी आगे बढ़िया हाँ तो व्हिच कंट्री जॉइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आज इज 27th मेंबर इन जून 2026 तो बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द बॉस काम दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ व्हिच टाइप ऑफ साइबर क्राइम द बॉस काम टा आपनकर को टाइप ऑफ साइबर क्राइम संगे आपनकर ये एसोसिएटेड तो आंसर होला सीईओ इंपर्सोनेशन बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज हला सीईओ इंपर्सोनेशन माने सीईओ ना रे मेल करी की फ्रॉड करबा हला सीईओ ना रे मेल करी की फ्रॉड करबा टी कथा कहौ छै द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ वुमेन्स फोरम 2026 वाज हेल्ड इन वीसीटी द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ वुमेन्स फोरम 2026 वाज हेल्ड इन वीसीटी तो आंसर होला बिश्केक इज द करेक्ट आंसर कोन गला बिश्केक इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वेयर वाज द 8th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन हेल्थ वेयर वाज द
8th National Conference on Cooperation held, तो आंसर गला श्रीनगर इज द करेक्ट आंसर हला श्रीनगर इज द करेक्ट आंसर द 8th National Conference on Cooperation कोड देखा मिलुची मत श्रीनगर देखा मिलुची द व्हिच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 व्हिच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2026 तो आंसर गला इंडिया इज द करेक्ट आंसर हला इंडिया इज द करेक्ट आंसर व्हिच कंट्री होस्टेड द पैक सिलिका समिट 2026 व्हिच कंट्री होस्टेड द पैक सिलिका समिट 2026 तो आंसर गला यूएसए इज द करेक्ट आंसर हला यूएसए इज द करेक्ट आंसर द सेकंड पैक सिलिका समिट 2026 वाज हेल्ड ऑन जून 2025-26 इन वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स तापर हम आसीबा तो सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ ए मैन द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ ए मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट इज ए मेमोरी ऑफ व्हिच एस्ट्रोनॉट व्हाट इज द करेक्ट आंसर तो ये आंसर कणाला आपनकर शुभांशु शुक्ला इज द करेक्ट आंसर ये प्रथम इंडियन जे के आपनकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जाइछंती ओके जिबा आगु बढ़िबा नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट 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 XM4 मिशन अंडर आपन कर जाइथिले स्पेस को जाइथिले हला स्पेस को जाइथिले XM4 मिशन अंडर नेक्स्ट देखिबा वर्ल्ड एमएसएमई डे वर्ल्ड एमएसएमई डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए वर्ल्ड एमएसएमई डे प्रति वर्ष जून 27 रे ऑब्जर्व करा जाए केबे करा जाए जून 27 रे ऑब्जर्व करा जाए नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए समस्त उत्तर दियंतु नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए आपनकर केबे जून 29 रे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व करा जाए व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द गो ईस्ट इनिशिएटिव टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ गो ईस्ट इनिशिएटिव कोड होई परिबो ओडिशा इज द करेक्ट आंसर गो ईस्ट ओडिशा हला गो ईस्ट आपनकर ओडिशा नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोची हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो इन 2026 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो इन 2026 तो ध्यान से गणला महेश दीक्षित इज द करेक्ट आंसर महेश दीक्षित इज द करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट देखिबा गला आपनकर गोटे मास हमें सारिले एठी हला आ गोटे मास देखिबा जुलाई मासटा को देखिबा एबे हला जुलाई मासटा को देखिबा जुलाई मास डाउनलोड हेई जाइतला बोधे जून सरला जुलाई देखिबा तापर मे को फेरिबा हला एमती करके हम फेरी चलीबा आ ओके तो देखो जुलाई रो डे डेट थोड़ा देखि नियंतु बहुत इंपोर्टेंट आपण मानकर जुलाई रो डे डेट थोड़ा देखि नियंतु नेशनल डॉक्टर्स डे जुलाई 1 रे आपण मानकर पडुची जीएसटी डे जुलाई 1 रे पडुची आपण मानकर चार्टर्ड अकाउंटेंट डे आपण मानकर जुलाई 1 रे पडुची तापर आपण मानकर पे इंपोर्टेंट होची 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मो जन्म होबार 2 मास परे आपण वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व करा गला हला गोटे एग्जांपल कहू तुम हमने मन रखि परिबो ठीक अछि राइट तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे आपण 15 जुलाई देन आपण पे इंपोर्टेंट हे जाउछ आपण कोन देखंतु ये कारगिल विजय दिवस काली आज पढ़ुले ना काली पढ़ुले आपनकर कारगिल विजय दिवस आपनकर देखंतु 26 जुलाई हैला तापर आपनकर आसी गला आपनकर इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप गला सेति तो कथा हो कोन बास प्रथम प्रश्न अमराबाद टाइगर रिजर्व को स्टेट रे लोकेटेड मो खाली आपनकर स्टैटिक क्वेश्चन पचारुनी खाली स्टैटिक क्वेश्चन पचारुनी अमराबाद टाइगर रिजर्व आपनकर को स्टेट रे लोकेटेड मते कहि दियंतु एठी हां कोठी होबो एठी आपनकर तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर न्यूज रे कोन पई थिला टाइगर प्रेजेंस स्ट्रांग हे छेठी अमराबाद टाइगर रिजर्व कोठु ये बाहरी छे आपण मानकर मते कहंतु ये आपण मानकर नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व रो गोटे पार्ट नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व होची इंडिया रो सबटो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व अमराबाद जे आपण मानकर एटा कोन नहीं जून आग स्टार्ट कर दिली तापर जुलाई तापर हम पछुक फेरी फेरी जिबा हला अरे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु प्रैक्टिस करोछु आउ नेक्स्ट मास को आपन गोटे क्रिस्प आउ कंसाइज मैनर रे पूरा 12 मास रो करंट अफेयर्स को हम रेगुलर बेसिस रे कवर करबा प्रति मास रे हम 12 मास रो करंट अफेयर्स को रिवीजन करबा आउ एई थर मंथली करंट अफेयर्स मु टिके लेंदी करबी आपन मानक पई एई थर मंथली करंट अफेयर्स 3 घंटा रो 4 घंटा भी जाई पारे सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ता पई टिके रेडी रहिबे हला एई थर मंथली करंट अफेयर्स पई समस्त टिके रेडी रहिबे ठीक अछि तो एक्सक्यूज नहीं किसी नहीं भाई मासिकिया जिनस तो टाइम टिके लागिबो एतर कहयार कोन छो जे पिला रहिले रहिबे न रहिले नहीं मो काम मु भल से पढिबे एतर मंथली करंट अफेयर्स एतर भल से हम कवर करिबा
All India Tiger Estimation 2026 recorded a strong tiger presence in the Amravati Tiger Reserve. In Amravati Tiger Reserve is located in the Nallamalla hills of the Eastern Ghats in Telangana. Hello. Then Tetrachichus Naradevnathit. Recently आपनकर वेस्ट बेंगल देखा मिलुछ को टाइप स्पेसीज आपनकर ये मते कोनतो parasitoid wasp FP5 flamingo long range missile FP5 हला FP5 long range missile was developed by which country? Russia, Ukraine, China and Germany. FP5 flamingo long range missile was developed by which country? तो आंसर कौन होला? Ukraine is the correct answer. कौन है गला? Ukraine is the correct answer. Ukraine recently claimed that FP5 flamingo long range missile struck a Russian defense manufacturing facility in the Volgograd region. Okay, next देखिए Abelardo de la Espriella has been elected as the president of which country? मत कहतु ये को कंट्री प्रेसिडेंट हिचंदी वर्ल्ड रो फर्स्ट टाइगर कन्वेंशन वाज हेल्ड इन रशिया केबे हितला 2010 रे हितला जगन कहउचंदी बढ़िया कथा जगन आ कि जिंस रहिला कि सेशन को लाइक करके समस्त संग साथी को शेयर कर दैछन तो देखो अगेन मैराथन बिफोर एग्जाम ही पिला माने देखंती मु जानि छी हमर क्लासेस गुडा करे पिला माने कम भी बसचंती बट अगेन आमर कर्तव्य होउची आमे पढेबु तुम माने को टाइम टू टाइम आमे आपन को मने पकेबु तुम माने कर माने एमिति नुह कि ए भीतर तुम भूली जाइथिबो जिंस को निका आ एई समय जो माने पढुचंती तांको प्रोबेबिलिटी 99% हाई अछि से माने एग्जाम क्वालिफाई करिवे आ एई समय जो माने सोइचंती एंटरटेनमेंट करूचंती मूवीज जाउचंती एन्जॉय करूचंती देन तांको प्रोबेबिलिटी बहुत मात्रा रे कमी जाउची सो आपण माने जो माने पढुचंती बिना होपलेस हेकी कंटिन्यू करि चलंतो हमकु बेले बेले लागुची कि पिला आसुनादी कोन क्लास करिया कोन पढिबा बट तापर पुणी मन पड़ुची कि जो 10 जन पिला सीरीयस हेकी पढुचंती तांको पई जदि हमें क्लास नउचु ताले सेमाने तो सीरीयस हेकी कवर करछन ना जिंस को नेकी मु एते जो ठिया हेकी गपुची दी जन माने गपुचंती ना तांकर परिश्रम व्यर्थ जीवो ना तमे जो आज बस तम परिश्रम व्यर्थ जीवो हला राइट तो ये आंसर करने आपनकर कोलंबिया इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखबा द यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस यूएचआई द यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस यूएफआई recently launched by the government of India functions under which mission? Success demand sacrifice नहीं basic need success sacrifice मागे नहीं success मागे consistency आमे 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 आम फ्यूचर पे पढ़िबा sacrifice नो सेटा हो कोन एक्स्ट्रा मस्ती जो समय रेगुलर बेसिस तुम ड्यूटी जाइथा से ड्यूटी तुम काली सरकारी चाकरी करता ड्यूटी जाइथा बट ड्यूटी न जाइकी तुम कौन कल बुलिल तुम चाकरी जीव कि नहीं जीव तो पलि जीव तो पॉइंट तो से कौन पॉइंट से ही तुम साक्रिफाइस करूँ तुम तुम कम कर चलच कर्म कर चलच आ जो मैंने पढ़ुना से कर्म करूना बास आ सिंपल आज इट इज त्यागर किसी मूल्य त्यागर काउंट ही मुझे नौनी त्याग ताकू कह जितेबाला बापा देह खराब थी तुमको बस पाठ पढ़ा पड़ो त्याग ताकू कह निजर गोटे जन निज लोक चली जाइए कि तार अंतिम संस्कार को तुम जापर न तुम परीक्षा एग्जाम डेट से दिन पढ़ुव त्याग ताकू कह रेगुलर बेसिस पाठ पढ़ा को कौन हालत भी त्याग कहनी मुझे कहीपरि तो से हिसाब से माइंड सेट करूँ है तो यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर व्हिच मिशन तो आंसर कौन होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इज द करेक्ट आंसर सातकोशिया टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट सातकोशिया टाइगर रिजर्व आपनकर को स्टेट लोकेटेड ओडिशा इज द करेक्ट आंसर न्यूज रे कोन पइथिला द एनटीसीए हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू ओडिशा's proposal to resume tiger reintroduction in Satakosia tiger reserve and Satakosia tiger reserve is located in Odisha and it comprises the Satakosia gorge sanctuary and Baisipali wildlife sanctuary. Next देखिबा the Malaprabha river that was recently seen in news is a tributary of which river? कौन तो आंसर कौन द मालप्रभा रिवर आपन कहार गोटे ट्रिब्यूटरी आंसर कौन है कृष्णा रिवर इज द करेक्ट आंसर न्यूज कौन में थिला द मालप्रभा रिवर इन कर्नाटक हैज रिसेंटली ड्राइड अप सुखी जाइछि सब जगह तो पानी सुखी जाइछि और कौन हाँ मिसिंग फील तो होचे ठीक कथा कहलो जगन ठीक कह मिसिंग फील तो होचे मिसिंग फील होचे मन पकाउछ से पिला मानक जो माने पढुतले आज्ञा ठीक अच्छे बढ़ी बढ़ी चलवा आगो को कौन यही तो जीवन सब केतला अप एंड डाउन केतला अधिका पिला केतला कम पिला एमती ही चलो
है सब सामान पिला रही ही ना बट इट्स ओके चलो आगे बढ़िया हु हाज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई आरबीआई रे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किए मत कहूँ तो कौन गला रविशंकर इज द करेक्ट आंसर है नेक्स्ट द नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन मानस फंक्शंस अंडर व्हिच मिनिस्ट्री द नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन मानस फंक्शंस अंडर व्हिच मिनिस्ट्री तो आंसर है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इज द करेक्ट आंसर नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन मानस has recorded nearly 10 lakh 9.94 lakh connection attempt since its launch as of June 2026. It has received more than 2.65 lakh drug related inputs and generated 16,200 plus actionable intelligence input. Next देखिए Hokata Hokojoe-shima Hokojoe-shima who recently become the world number 1 in the main shot put F57 category. Hello. Belongs to which state? Nagaland, Tripura, Mizoram and Gujarat. What is the correct answer? Nagaland, Tripura, Mizoram and Gujarat. तो ध्यान से करना होगा Nagaland is the correct answer. Hello. Nagaland is the correct answer. Which state launched cyber safety campaign named Operation Surakshit Cyberspace in July 2026? Which state launched cyber safety campaign named Operation Surakshit Cyberspace in July 2026? तो ध्यान से करना आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान. तो ध्यान से करना जो अपना कर देखो गुजरात इज द करेक्ट आंसर है साइबर सेफ्टी कैंपेन नाटा होची ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस. नेक्स्ट देखिबा ताल वोल्कानो कहला ताल वोल्कानो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री ताल वोल्कानो आपनकर को कंट्री लोकेटेड मते कहि दियंतु तो कंट्री में कोन हला फिलिपाइंस इज द करेक्ट आंसर ताल वोल्कानो आपनकर को देखा मिलुची फिलिपाइंस देखा मिलुची ताल वोल्कानो इन द फिलिपाइंस रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड ए ब्रीफ फेराटोमैग्नेटिक इरप्शन ओके रहिला इरप्शन देखा मिली. नेक्स्ट देखिबा वी स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दुर्गा स्क्वाड टू एनहांस वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन म्युनिसिपल एंड कमिश्नरेट एरियाज दुर्गा स्क्वाड किए आपन लॉन्च करछ मते कहि दियंतु एनीवन हियर दुर्गा स्क्वाड वी स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दुर्गा स्क्वाड to enhance women safety and security in municipal and commissionerate area. So the answer is West Bengal is the correct answer. West Bengal launched Durga Squad to enhance women safety and security in municipal and commissionerate areas. A cyber help desk has been established in 500 police stations to address cyber crime and bank fraud cases. Next देखिए the International Day of Cooperatives 2026. The International Day of Cooperatives 2026 ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व कर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव को आपनकर जुलाई 4 रे आपनकर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव को ऑब्जर्व करा जाय हला देन देखिबा द कास्पियन कोब्रा प्रश्न कोन अछि द कास्पियन कोब्रा दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज प्राइमरीली नेटिव टू व्हिच रीजन कास्पियन कोब्रा को रीजन को आपनकर नेटिव मते कहि दोन तो आंसर कनला सेंट्रल एशिया इज द करेक्ट आंसर सेंट्रल एशिया इज द करेक्ट आंसर कास्पियन कोब्रा. The avian malaria recently in news for the threatening bird populations in Hawaii. The avian malaria recently in news for threatening bird populations in Hawaii is caused by which infectious agent? तो agent ना कौन है parasite is the correct answer. कौन है गला parasite is the correct answer. Next देखिए the locus the locus by loc people OS operating system platform operates under which government scheme? The LOC operating system platform operates under which government scheme? तो ध्यान से करना गला नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कौन है गला नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. नेक्स्ट देखिए ए न्यू डीप सी फिश स्पीसीज नेम्ड साइटोप्सिस इंडिका was recently discovered in which state? A new deep sea fish species named Cytopsis indica was recently discovered in which state? तो ध्यान से करना गला केरलम इज द करेक्ट आंसर कौन है गला केरलम इज द करेक्ट आंसर. ठीक अच्छे बुझिले. नेक्स्ट देखिबा द विकसित उड़ान इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द नेक्स्ट फेज ऑफ व्हिच स्टेट गवर्नमेंट स्कीम? कौन कहला द विकसित उड़ान इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नेक्स्ट फेज ऑफ द व्हिच स्टेट गवर्नमेंट स्कीम? तो ध्यान से करना उड़े देश का आम नागरिक आम समस्त उड़ान स्कीम रो फुल फॉर्म जानना के माने उड़ान रो फुल फॉर्म होची उड़े देश का आम नागरिक हला. वर्ल्ड बैडमिंटन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे? वर्ल्ड बैडमिंटन डे प्रति वर्ष को दिन सेलिब्रेट करा जाए? जुलाई 5 रे सेलिब्रेट करा जाए. वर्ल्ड बैडमिंटन डे जुलाई 5 रे सेलिब्रेट करा जाए हला. लाखोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम.
तो ये आंसर कहला आसाम इज द करेक्ट आंसर कौन है न्यूज रे इतना लार्ज स्केल एविक्शन ड्राइव करिया को मिली आपन एनक्रोचमेंट आसाम रे जो माने कौन कहवा जो जबरदखल करके से जबरदखल जगह गुड़ा को क्लीयर करा जाउची तापई आपण मानकर लाख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपंकर न्यूज रे थिला कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जगह को तुम जो जबरदखल करके अच्छ तो या तो निहाती तुमको सेठू बाहर करा जीवो से हिसाब रे आसाम रो कथा स्टोरी हम देखुतले आसाम रे आपन कथा देखले आसाम रो क्लासिकल डांस कोन क्षत्रिय हला आसाम रो सीएम के हेमंत बिश्व शर्मा आसाम रो गवर्नर के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हला नेक्स्ट देखिबा ए न्यू प्लांट स्पीसीज नेम्ड कांस्कोरा अग्नि ए न्यू प्लांट स्पीसीज नेम्ड कांस्कोरा अग्नि was recently discovered in which state? तो state ना कौन गला महाराष्ट्र is the correct answer. Next, rutile that was recently seen in news primarily composed of which compound? rutile अपन माने करो को compound को नेकी बने जमते कहि दियन rutile टा देखिए केन आंसर ठीक कहउचंते rutile that was recently seen in news is primarily composed of which compound? तो titanium dioxide is the correct answer. Next देखिबा who represent India and chaired 9th session of the intergovernmental group expert IGE on the consumer protection law and policy. What is the correct answer? consumer protection law and policy under रे किए represent करछि इंडिया को 9th session of the intergovernmental group of expert रे तो आंसर कहला निधि खारे is the correct answer. कोन गला निधि खारे is the correct answer. बुझी पाले right? India chaired the 9th session of the intergovernmental group of experts on the consumer protection law and policy organized by United Nations Trade and Development in Geneva, Switzerland. The session focused on global consumer protection including product safety, sustainable consumption and cross-border consumer protection. Next देखिबा what is the rank of India in the global passport index 2026? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रे इंडिया रैंक केते मते कहि दियंतो टे आंसर कोन हबो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 तो टे आंसर कोन 125th इज द करेक्ट आंसर 125th इज द करेक्ट आंसर ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रे इंडिया रैंक केते 125 आपण मानकर केते 197 टा कंट्री भितर नेक्स्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अलगा ये अलगा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अलगा ये अलगा हला तो we state or UT government launched mission कायाकल्प to upgrade infrastructure in government school. ऑपरेशन कायाकल्प किए आपनकर बनेछि जहा द्वारा कि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्कूल में बेटर कर जाय परिबो दिल्ली गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर हैला मिशन कायाकल्प. नेक्स्ट देखिबा द विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना द विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना has been launched by which state? ओके आगो बढ़िया चलो द विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट तो ध्यान संगला आपनकर यूपी इज द करेक्ट आंसर. व्हिच कंट्री won the ICC Women's T20 Cricket World Cup 2026? Which country won the ICC Women's T20 World Cup 2026 तो ध्यान संगला ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर हला ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोची हैंडलूम हैकाथन 2026 हैज बीन लॉन्च्ड अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? हैंडलूम हैकाथन आपनकर को मिनिस्ट्री अंडर लॉन्च होचे तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज द करेक्ट आंसर. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज द करेक्ट आंसर. द ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लॉन्च हैंडलूम हैकाथन 2026. द प्रम्बनन टेंपल कॉम्प्लेक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? द प्रम्बनन टेंपल कॉम्प्लेक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो ये आंसर कोन जो आपन मानकर मते कोन तो ये आंसर गला आपन इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर. कोन गला इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर. ठीक अछि. नेक्स्ट देखिबा अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड एसए 2023 and 24 report what was India's gross enrollment ratio in higher education?
एसआर रिपोर्ट हिसाब रे सॉरी एसआर रिपोर्ट हिसाब रे आपनकर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो केते 30.0 ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो केते 30.0 आपनकर हायर एजुकेशन आपनकर 30% आपनकर होच ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट has been developed by which organization पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट आपनकर कहा द्वारा को ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपनकर एटी मते कोंतु डेवलप करा है तो आंसर गला डीआरडीओ इज द करेक्ट आंसर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल is primarily designed for which type of mission? What is the correct answer? दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल is primarily designed for which type of mission? तो आंसर गला इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकनेसेंस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिबो what kind of disease is neonatal sepsis that was recently seen in news? What kind of disease is neonatal sepsis that was recently seen in news? तो आंसर गला आपनकर ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन इज द करेक्ट आंसर. कोन गला ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिबा a new flowering tree species named Mitrephora rasmi. A new flowering tree species named Mitrephora rasmi was recently discovered in which state? The state of Arunachal Pradesh is the correct answer. In July 2026, where was Center of Excellence on Human Wildlife Conflict established? भलो प्रश्न टाटा आपण मानकर मते उत्तर दियंतु. In July 2026, where was Center of Excellence on Human Wildlife Conflict established? तो आंसर कोन गला कोयंबटूर तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर. कोन गला कोयंबटूर तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन व्हिच डे? इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन व्हिच डे? तो आंसर जनवरी सॉरी जुलाई 12 इज द करेक्ट आंसर. हला जुलाई 12 इज द करेक्ट आंसर. अच्छा यूएनसीसीडी रो फुल फॉर्म मते की कहि परिबे? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करा पे यूएनसीसीडी कहि के आपन मानकर गोटे कोन कन्वेंशन भी अछि. एट द सेम टाइम आमे एठी एनुअली केमिते सैंड और डस्ट स्टॉर्म को लड़ीबा ता पई भी गोटे आपन मानकर एठी डेट ऑब्जर्व करछन हम जुलाई 12 रे. नेक्स्ट देखिबा द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटीग्रेशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज इन लीगल एजुकेशन वाज हेल्ड इन व्हिच सिटी? द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटीग्रेशन ऑफ द रीजनल लैंग्वेज इन लीगल एजुकेशन वाज हेल्ड इन व्हिच सिटी? द सिटी ना कोन हला न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. सिटी ना कोन हला न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन कोलैबोरेशन विथ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड ए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन strengthening legal education through integration of regional languages. Next देखिबा जोधपुरी मोजारी which recently received a geographical indication tag. जोधपुरी मोजारी आपनकर गोटे जीआई टैग पाइछि ट्रेडिशनली क्राफ्टेड बाय which community? को कम्युनिटी ट्रेडिशनल को क्राफ्ट करछन मते कहंतु. तो कम्युनिटी ना होछि झिंगार हला मोजारी क्राफ्ट आपनकर जोधपुर रो 200 वर्ष पुराना मोजारी क्राफ्ट जीआई टैग पाइछि आपण मानकर जिंगार कम्युनिटी. ओके जिंगार कम्युनिटी जिनागार सर जिंगार को जिनागार कम्युनिटी आपण मानकर बनछन. द जीआई सर्टिफिकेट वाज अवार्डेड टू द जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन एंड ग्राम विकास सेवा संस्थान आफ्टर द एप्लिकेशन सबमिटेड इन 2021 हला सेबेटू आरंभ करके आज आपनकर याको सबमिशन को एक्सेप्ट करा गला हला. तापर हम आसीबा द नेशनल पर्यावरण संरक्षण संकल्प. द नेशनल पर्यावरण संरक्षण संकल्प एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिजोल्यूशन प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच सिटी? चंडीगढ़, देहरादून, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई. चंडीगढ़, देहरादून, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई. द नेशनल पर्यावरण संरक्षण संकल्प एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिजोल्यूशन प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच सिटी? तो आंसर गला न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. द नेशनल पर्यावरण संरक्षण संकल्प हला. नेक्स्ट देखिबा आपनकर किछना में जुलाई मास रे जिंस कवर करले हला. एमे हम देखिबा मे मास रे जिंस किछटा कवर करिबा. मे मास टिके लंबा रहइबो अधा घंटे मे मास रे हम कवर करिबा. मे मास रे हम किछ किछटा कवर करिबा. एको मु छाडी दउछे
तो उदयन फोर्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट उदयन फोर्ट आपनकर मते कहंतु हला उदयन फोर्ट आपनकर रिसेंटली न्यूज थला को स्टेट लोकेटेड स्टेट ना यूपी इज द करेक्ट आंसर हला बाकी 2500 वर्ष पुराना ये फोर्ट आपनकर हला 2500 वर्ष फोर्ट पुराना फोर्ट आपनकर नेक्स्ट देखिबा स्वामित्व स्कीम लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्ट्री स्वामित्व स्कीम आपनकर को मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च कराई छै मिनिस्टर नाला मिनिस्टर पंचायत राज इज द करेक्ट आंसर मिनिस्टर नाला कोन मिनिस्टर पंचायत राज इज द करेक्ट आंसर स्वामित्व स्कीम आपनकर हला नेक्स्ट देखिबा द कोरवाई ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन व्हिच कंट्री द कोरवाई ट्राइब आपनकर प्राइमरीली को कंट्री आपनकर मते कोन एठी ये फाउंड इज द कोरवाई ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन व्हिच कंट्री तो आंसर नाला इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर द कोरवाई ट्राइब इज बीइंग री-एग्जामिन्ड एज द अर्लियर myth अबाउट द कैनिबलिज्म ओके मनीष को मारी की खाइबाटा को नै कि आपनकर जो न्यूज़ थिला आपनकर हला ताको री-एग्जामिन करा गला आपनकर ताको नै कि द ट्राइब लिव्स इन द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ पपुआ इंडोनेशिया एंड रिमेन्ड आइसोलेटेड अंटिल 1970s 1970 जाय से आइसोलेटेड थिले बाहर लोकन संगे से कनेक्शन किछ नथला आपनकर कोरवाई ट्राइब रो नेक्स्ट देखिबा डाम्पे सैटेलाइट कथा कहौ छी डाम्पे सैटेलाइट डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री डाम्पे सैटेलाइट को डेवलप करछे चाइना आपनकर हला मेड ऑब्जर्वेशन ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ द कॉस्मिक रेज ऊपर आपनकर ऑब्जर्वेशन करिछे डाम्पे सैटेलाइट नेक्स्ट देखिबा गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपनकर को स्टेट लोकेटेड मते कहंतु तो स्टेट ना कोन गेला आपनकर गुजरात इज द करेक्ट आंसर गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज विटनेस्ड ए डिमांड फ्रॉम द कमिटी ऑफ monks to remove its eco-sensitive zone status. The eco-sensitive zone status was notified about 10 years ago to protect the region's fragile ecosystem. What is the name of India's integrated emergency alert system recently launched by India? India रा आपनकर integrated emergency alert system आपनकर सचेत हला extremely severe alert आपन देखिथिबे extremely severe alert मतलब वाइब्रेशन सहित आपनकर गोटे आरंभ आसन थला आपनकर लास्ट मंथ रे मे मास बेलू आस्तला मु दहिबरा खाउतली मोर आस्तला मोर मन अछि इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द सचेत सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम एज एन इंडिजिनियस इमरजेंसी अलर्ट सर्विस सचेत मीनिंग अलर्ट इज इट डिजाइन्ड टू डिलीवर रियल टाइम वार्निंग डायरेक्टली टू मोबाइल यूजर्स इन जियो टारगेटेड एरियाज आगु देखिबा व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ग्लोबल हेपाटाइटिस रिपोर्ट 2026 व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ग्लोबल हेपाटाइटिस रिपोर्ट 2026 को ऑर्गेनाइजेशन बाहर कर मते कहंतु तो कोन गेला आपनकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा सिनबैक्स कोन हला डरी जाइतिलो समस्त डरी जाइतिले ये कोन हला कहि कि जरा डबल फोन तो से आउट टेंशन हो जाइतिबो भाई ये फोन हाई वाइब्रेट हला आर फोन वाइब्रेट हो फोन रे बम आसी गला कि लोक आज एक जदि डिजिटल न नुआ डिजिटल को फोन फाटी जीवो फोन रे गोटे भाइरस आसी जाइछि फोन फाटी जीवो गाँ लोक खाली डर दो गाँ लोक देखो केमथि हेबे गाँ लोक माने गाँ लोक कथा मु कोनी गाँ लोक रे जो माने डिजिटली आपण मानकर ता संगे एते कनेक्टेड ना सिस्टम संगे मोबाइल फोन गोटे मेसेज आसो से मेसेज क्लिक कर मोबाइल फोन फाटी जीवो देखियो तापर मोबाइल जदि बंद न करी थोइ देबे हला तो एजेंसी को तो निहाती आम स्प्रेड करा दरकार सचेत कही गोटे सिस्टम एका बेले समस्त को अलर्ट दिया जाय परिबो किछि प्रॉब्लम हला माने हला चलंत सिनबैक्स 2026 is a joint military exercise between India and which country? India and Cambodia is the correct answer. The Indian Army contingent has released the Cambodia for the second edition of the India-Cambodia joint military exercise Sinbex 2026. The International Swan Day is celebrated on which day every year? The International Swan Day प्रति वर्ष को दिन से आपनकर मते कोन सेलिब्रेट करा जाय तो आपनकर कोन जो मे 3 is the correct answer. The International Swan Day प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाय मे 3 रे हला every year. On International Swan Day, the Ministry of New and Renewable Energy organized the Run for Sun Marathon. Mount Dukono कथा को आउछ एठी आपन मानकर was recently seen in news is located in which country? Mount Dukono आपन मानकर इंडोनेशिया लोकेटेड इंडोनेशिया. तो Mount Dukono recently erupted, sending an ash column up to 1400 meters above its summit. It is an active volcano located on the Halmahera Island in North Maluku, Indonesia. एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एवं न्यूज देखिले कि कॉल आसुची रिसीव कले ऑटोमेटिक अकाउंट रु बैलेंस कटे उड़ी जाउची सेमिते अबागत न किछ गोटे थिबो सिस्टम तार डायरेक्टली कॉल आसी पैसा कटियार सिस्टम तो सेमति किछ नाही सेमति अबागत नुह डायरेक्टली कॉल आसी जिंस होबार जदि किछ होउची ताले तार किछ गोटे इंटरनल सिस्टम थिबो नीड टू चेक ऑन दैट तो काउथर चेक करिया पड़े मते ओने जे कोन नाही
है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ऑपरेट्स अंडर व्हिच एक्ट तो को एक्ट अंडर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड आपनकर ऑपरेट करछि एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 ओके जीवा सर मु फास्ट रु क्लास करूछि एबे 1 आवर हबो क्लास हेलानी हबा 1 आवर अरे घंटे 10 मिनिट क्लास हेलानी 1 आवर क्लास नो घंटे 10 मिनिट क्लास हे गलानी हला आज सकाळ न्यूज़ देखिलो अब देखुची व्यस्त होनी हला एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड मिशन दृष्टि द वर्ल्ड्स फर्स्ट अप टू सर सैटेलाइट व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड मिशन दृष्टि द वर्ल्ड्स फर्स्ट अप टू सर सैटेलाइट तो आंसर करला गैलेक्सी इज द करेक्ट आंसर गैलेक्सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा हु ओन द मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 हु ओन द मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 मिरा एंड्रेवा मार्ता कोस्योक इगा स्वेतिक एंड आर्याना सबलेंका हु ओन द मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 तो ध्यान संगला आपनकर मार्ता कोस्युक इज द करेक्ट आंसर मार्ता कोस्युक इज द करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट देखिबा कुलदीप कुमार हु रिसेंटली सेट ए न्यू नेशनल मेंस पीपल वॉल्ट रिकॉर्ड ऑफ 5.41 मीटर बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट कुलदीप कुमार हु रिसेंटली सेट ए न्यू नेशनल मेंस पोल वॉल्ट रिकॉर्ड ऑफ 5.41 मीटर बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट तो स्टेट ना कणाला मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर हला तो कुलदीप कुमार फ्रॉम मध्य प्रदेश सेट ए न्यू नेशनल मेंस पोल वॉल्ट रिकॉर्ड ऑफ 5.41 मीटर ही अचीव्ड दिस feat at the inaugural Indian indoor open combined event and pole vault competition Bhubaneswar Great Himalayan National Park is located in which state the Great Himalayan National Park is located in which state the state na kanala Himachal Pradesh is the correct answer kona gala Himachal Pradesh is the correct answer the Great Himalayan National Park is located in which state the Himachal Pradesh is the correct answer Minister of Environment has declared 326.69 square kilometer area around the Great Himalayan National Park okay चलो आगू देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची हांटा भाइरस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बहुत इंपोर्टेंट आपन मानकर हांटा भाइरस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय व्हिच स्पीसीज हांटा भाइरस आपन मानकर मेनली कहा द्वारा आपन ट्रांसमिट हुए बाय व्हिच स्पीसीज हांटा भाइरस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय व्हिच स्पीसीज स्पीसीज ना होच कोन रोडेंट स्पीसीज ना कोन आपन मानकर रोडेंट हांटा भाइरस रोडेंट द्वारा आपन मानकर स्प्रेड हुए The Bureau of Indian Standard functions under which ministry? The Bureau of Indian Standard functions under which ministry? The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Ministry of Consumer Affairs, आपनकर Food and Public Distribution. Next देखिबा. The Sanjay Gandhi National Park is located in which state? The Sanjay Gandhi National Park is located in which state? को state located Sanjay Gandhi National Park? Maharashtra is the correct answer. The Maharashtra Forest Department has reviewed a proposal to increase the annual ticket rates for Sanjay Gandhi National Park. Next देखिबा Mayo volcano that was recently seen in news is located in which country? Mayo volcano आपनकर को country located मते कोहंतु anyone here try to answer Mayo volcano that was recently seen in news is located in which country the country ना कण गला Philippines is the correct answer Philippines is the correct answer नेक्स्ट देखिबा इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व डे एनुअली ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए मई 4 रे ऑब्जर्व करा जाए इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे आपनकर मई 4 रे ऑब्जर्व करा जाए व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट दीपक रो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोन आपनकर स्ट्रेटेजिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बॉर्डर कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बॉर्डर कनेक्टिविटी होच आपनकर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहार प्रोजेक्ट दीपक रो हला who become the first man to win 5 consecutive ATP Association of Tennis Professional Masters 1000 title who become the first man to win 5 consecutive ATP Association of the Tennis Professional Masters 1000 title तो आंसर कोन गेला जानिक सिनर इज द करेक्ट आंसर कोन गेला जानिक सिनर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा recently we state or UT Recently, which state or UT set a Guinness World Record by unfurling the largest underwater national flag? Recently, which state or UT set a Guinness World Record by unfurling the largest underwater national flag? तो ध्यान संगला अंडमान निकोबार is the correct answer. अंडमान एंड निकोबार is the correct answer. एतिक तो आपण समस्त जानि चंती. हला नेक्स्ट देखिबा लिपुलेक पास that was recently seen in news is located in which state? लिपुलेक पास आपण को recently news थिला ये कोठी लोकेटेड आपण मानकर हला
in news located in which state? The state na kana Uttarakhand is the correct answer. Lipulek Pass that was recently seen in news is located in which state? So the answer kana apankara Uttarakhand is the correct answer. Nepal has objected to India's resuming the Kailash Mansarovar Yatra through Lipulek Pass. Which institution? Chhadandu question chhad diyantu. Which port in Gujarat has launched a pilot project to convert Prosopis juliflora into biomethanol for clean maritime fuel? What is the correct answer? Try to answer the question. Which port in Gujarat has launched a pilot project to convert Prosopis juliflora into biomethanol for clean maritime fuel? So the answer is Dindayal Port Kandla is the correct answer. Dindayal Port Kandla is the correct answer. Okay, ठीक अच्छे. Next देखिबा. Next कोची World Asthma Day is observed every year on which day? World Asthma Day प्रतिवर्ष कोउ दिन ऑब्जर्व करा जाए? May 5 रे ऑब्जर्व करा जाए. World Asthma Day प्रतिवर्ष कोउ दिन ऑब्जर्व करा जाए? May 5 रे ऑब्जर्व करा जाए. Next देखिबा. Balikatan 2026 is a joint military exercise between the Philippines and which country? Balikatan 2026 is a joint military exercise between Philippines and which country? Philippines and United States is the correct answer. Balikatan आपनकर Philippines और USA भीतर आपनकर exercise joint exercise. Next देखिबा. Which country has become the first non-European country to attend the European Political Community Summit? Which country has become the first non-European country to attend the European Political Community Summit? So the answer Canada is the correct answer. Canada has become the first non-European country to attend the European Political Community Summit in Yerevan, Armenia. And Canadian Prime Minister Mark Carney aims to strengthen trade and diplomatic ties among reduced access to United States markets. Okay. Startup Kadapa initiative was launched by which state government? Startup Kadapa आपनकर को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एठी मत कोन लॉन्च कराई छै? Startup Kadapa आपनकर आंध्र प्रदेश द्वारा कराई छै. मतलब Startup Kadapa is an ambitious project in Kadapa, Andhra Pradesh, aimed at nurturing entrepreneurial talent and providing a platform for youth to explore new opportunities. World Press Freedom Day कथा कुआ होछि. भलो प्रश्नटा आपण मानकर. World Press Freedom Day कथा कुआ होछि. Is observed annually on which day? तो आंसर करला May 3 is the correct answer. हला. World Press Freedom Day is observed annually on which day? तो आंसर करला May 3. World Press Day is observed annually on May 3 to promote and protect press freedom. It encourages initiatives that support freedom of expression and independent journalism worldwide. हला. मत कोन तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रे इंडिया रा रैंक केते? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रे इंडिया रैंक ता केते मत कमेंट सेक्शन में की कहि परिबे? ट्राई टू आंसर. ठीक है, आंसर ठीक कहउछंती. प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रे इंडिया रा रैंक केते? भलरु खराब ना खराब रु भलो को पोजीशन को हमें जाइछंती? हां, तो ए वर्ष थीम होउची शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ पीस. शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ पीस. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? एई तो को प्रश्न पळे आसला 157th. यस, कोन हला 157th इज द रैंक. हला, तो ये आपनकर गला 2024 रे 159 थिला, 2025 रे 151 हेतिला, पुनी 2026 रे 157 हे गला. हला. नेक्स्ट देखिबा. Which country has launched the compact advanced satellite 502? CAS 502. Which country has launched the compact advanced satellite 502? तो आंसर कनाला साउथ कोरिया इज द करेक्ट आंसर. कोन हे गला? साउथ कोरिया इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए. Operation Clawing Back has been conducted by which state government to curb illegal wildlife trade? Operation Clawing Back has been conducted by which state government to curb illegal wildlife trade? तो आंसर कनाला हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर. हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर. Operation Clawing Back. हला. नेक्स्ट देखिबा. According to Central Marine Fisheries Research Institute data, according to Central Marine Fisheries Research Institute data, which state has become India's top marine fish producing state in 2025? According to Central Marine Fisheries Research Institute data, which state has become India's top marine fish producing state in 2025? तो ध्यान रखना, Tamil Nadu is the correct answer. हला, Tamil Nadu is the correct answer. Next देखिबा. Which organization developed India's first germanium-free thermal imaging payload Lumira? Which organization developed India's first germanium-free thermal imaging payload Lumira?
E40 फॉर ड्रोन्स को ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर इंडिया प्रथम जर्मानियम फ्री थर्मल इमेजिंग पेलोड लुमिरा तो आंसर है एन स्पेस लाइफ इज द करेक्ट आंसर एन स्पेस लाइफ इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट आज करंट अफेयर्स क्लास सकाळ सरलानी ना रूपाली सकाळ 8:30 आज करंट अफेयर्स क्लास थिला आसी नथले जॉइन कर नथले सकाळे हां इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट आर रेगुलेटेड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन तो आंसर होला सेबी इज द करेक्ट आंसर किरा को रेगुलेट करछि सेबी रेगुलेट करछि बुझि पाले नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूछि टोडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन व्हिच स्टेट टोडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व को स्टेट लोकेटेड तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर टोडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व in Chandrapur, Maharashtra revealed key wildlife data through the annual Machan census waterholes. Okay, Salantu, what is the name of the scheme recently approved by the Union Cabinet to provide credit guarantee support to business? Credit guarantee support business man को दिया जाए को scheme under रे credit guarantee को ले कौन loan रो guarantee कौन ला ECLGS emergency credit line guarantee scheme emergency credit line guarantee scheme अपना ना करो है ना next देखिए Where was the conference on brain computer interface held? Where was the conference on brain computer interface held? तो आंसर वाला New Delhi is the correct answer. New Delhi is the correct answer. Next देखिए What is the theme of the IIT Madras Technology Summit 2026? What is the theme of the IIT Madras Technology Summit 2026? तो कौन है from IITM for Bharat building together. Okay, from IITM for Bharat. Building together. Next देखिए which Indian journalist won Pulitzer Prize 2026 in the illustrated reporting and commentary category? What is the correct answer? Which Indian journalist won the Pulitzer Prize 2026 in the illustrated reporting and commentary category? तो आंसर वाला Anand RK and Suparna Sharma is the correct answer. Anand RK and Suparna Sharma is the correct answer for the story called Trapped. Okay. For the story called Trapped. Trapped कई कोड आपन स्टोरी थिला सेति आपन कर ये थी मिली छै नेक्स्ट देखिबा हला बा प्रोजेक्ट हम कहि पारे ओटा प्रोजेक्ट हमर ट्रैप्ड कहि कोड प्रोजेक्ट थिला सेति आपन पुलिसर अवार्ड तंग मिली छै नेक्स्ट आसीबा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई रो नवा डेप्यूटी गवर्नर के बनछन मते कहंतु हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई तो आंसर होला रोहित जैन इज द करेक्ट आंसर कोन गेला Rohit Jain is the correct answer. Hala. Next देखिए Which organization released the Global Methane Tracker 2026 report? Which organization released the Global Methane Tracker 2026 report? तो आंसर कौन है अपना कर International Energy Agency is the correct answer. International Energy Agency is the correct answer. The Global Methane Tracker. Hello. Next देखिए Where was the National Conference on Rare Disease 2026 held? Where was the National Conference on Rare Disease 2026 held? तो आंसर वाला New Delhi is the correct answer. New Delhi is the correct answer. National Conference on Rare Disease आपण मानकर केबे New Delhi आपण देखिया को मिलि छै. What is the name of the initiative approved by the Union Cabinet in May 2026 to boost India's cotton sector? What is the name of the initiative approved by the Union Cabinet in May 2026 to boost India's cotton sector? तो आंसर वाला Mission for Cotton Productivity. कोन होला Mission for Cotton Productivity है लाई थीम ना होला नेक्स्ट देखिबा वी स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द 100 days आयुष्मान स्टूडेंट कवरेज मिशन इन May 2026 वी स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द 100 days आयुष्मान स्टूडेंट कवरेज मिशन इन May 2026 तो आंसर ना नागालैंड इज द करेक्ट आंसर नागालैंड इज द करेक्ट आंसर वी स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड एन एक्शन प्लान टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम बाय इंटीग्रेटिंग एग्रीकल्चर विथ एनिमल हस्बेंड्री We state government approved an action plan to increase farmers' income by integrating agriculture with animal husbandry. तो आंसर वाला UP is the correct answer. UP is the correct answer. Next question देखिबा. NISAR is a joint mission between ISRO and which organization? NASA ISRO synthetic aperture radar. NASA आउ कहा भीतर हबो ISRO भीतर हबो. मांगे नै मते को हला चलो NASA ना जानि परलो NASA ISRO synthetic aperture radar. Hello. What is the Naegleria fowleri? What is Naegleria fowleri that was recently seen in news? Brain eating amoeba, invasive weeds, malaria parasite, sleeping sickness parasite. Naegleria fowleri अपन recently news रे थिला
ये आपन कौन मत कहतु ब्रेन इटिंग अमीबा इज द करेक्ट आंसर कौन होगा ब्रेन इटिंग अमीबा इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपन कौन कहूची नेक्स्ट कहूची द मिथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम मार्स द मिथेन अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम मार्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन मत कहतु मार्स कहार गोटे इनिशिएटिव द मिथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम मार्स is an initiative of which organization कार initiative United Nations Environment Program is the correct answer United Nations Environment Program UNEP is the correct answer hello का कथा कहूची मार्स कथा कहूची water euphorbia उद्गम पोर्टल was developed by which institution उद्गम पोर्टल को institution द्वारा आपन डेवलप कराइछ मते कहंतु या के जण आंसर ठीक कहउछंती उद्गम पोर्टल was developed by which institution Security and Exchange Board of India RBI National Payment Corporation of India Ministry of Finance आंसर होला आपनकर Reserve Bank of India is the correct answer RBI is the correct answer कहा कथा कहउछ उद्गम पोर्टल कथा कहउछ उद्गम रा फुल फॉर्म कोन ऑनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन ओके तो यार काम होउछ कि एमि गोटे ऑनलाइन पोर्टल जहा द्वारा कि लोक माने जो पैसा रखी दैछंती जहा को क्लेम करि पार नाहंती ताकू क्लेम करने पे आउ थे पोर्टल को ओपन कराई भाई तुम पैसा रही जाइला तुम क्लेम कर नथिला प्लीज क्लेम योर मनी ओके ए न्यू स्पेसिसटा छाड़ुची डॉर्जिलोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री डॉर्जिलोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आपण मानकर को कंट्री लोकेटेड कंट्री ना हला कोन भूटान इज द करेक्ट आंसर कंट्री ना कोन हेला भूटान इज द करेक्ट आंसर हला द अर्बन टेस्ट बेड एंड एरोसोल ऑब्जर्वेटरी The urban test bed and aerosol observatory has been established in which city? The urban test bed and aerosol observatory has been established in which city? The city name is Chennai is the correct answer. Chennai is the correct answer. Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune established an urban test bed and aerosol observatory at SRM Institute of Science and Technology under the mission Mosam. Which country is the host of International Big Cat Alliance Summit 2026? Which country is the host of International Big Cat Alliance Summit 2026 तो ध्यान से वाला इंडिया इज द करेक्ट आंसर Which country is the host of International Big Cat Alliance Summit 2026 तो ध्यान से वाला आपन इंडिया किंतु आईबीसी रो मीटिंग ता इंडिया रे हेई पारलानी कोन पय आपन मानकर गोटे गोटे डिजीज पय हेई पारलानी डिजीज ता आपन मानकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट रे हेतिला से डिजीज रो नाटा मते कहि दियंतु से डिजीज रो मते टिके नाटा कहि देबे कमेंट सेक्शन रे देखा के जण आंसर ठीक कहउचंती को बाकी बिग कैट भीतर आपन को को माने आछुंदी लायन आछु टाइगर आछु लियोपार्ड आछु स्नो लियोपार्ड आछु चीता आछु जागवर आछु एंड प्यूमा आछु बुझिले जिबा आगु को बढ़िबा नेक्स्ट देखिबा द स्वस्थ भारत पोर्टल इबोला वायरस ना इबोला वायरस बढ़िया कथा ओके द स्वस्थ भारत पोर्टल वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग व्हिच समिट व्हाट इज द करेक्ट आंसर द समिट नाउ इज कोन 10th नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी इज द करेक्ट आंसर द स्वस्थ भारत पोर्टल आपण कोन नेक्स्ट देखिबा हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन तो आंसर वाला शशि शेखर वेम्पति इज द करेक्ट आंसर शशि शेखर वेम्पति इज द करेक्ट आंसर द सेकंड ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप The second BRICS employment working group meeting was held in which city? तो सीटर ना कौन गला तिरुवनंतपुरम is the correct answer. तिरुवनंतपुरम is the correct answer. Okay? ठीक अच्छे. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन करो. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ आपन करो. देखो क्वेश्चन पढ़ो ठीक है. बड़ा क्वेश्चन टा पढ़ो ठीक है ना.
ओके which institutes were recognized by the India Book of Record and Asia Book of Record for the innovation road block project? तो ध्यान सकना आपनकर CSR and भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL हला ओके नेक्स्ट देखिबा where was the second edition of the joint commanders conference held? Where was the second edition of the joint commanders conference held? जयपुर भोपाल मुंबई एंड वाराणसी ओके ठीक अछि ओके मतलब कहूँ where was the second edition of the joint commanders conference held? तो ध्यान सकना जयपुर इज द करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट देखिबा which ministry released the annual survey of unincorporated sector enterprises 2025 report? Which ministry released the annual survey of unincorporated sector enterprises 2025 report? तो ध्यान सकना Ministry of Statistics and Program Implementation is the correct answer. Ministry of Statistics and Program Implementation is the correct answer. Next question देखिबा next question कोच अपना कर देखंतु the which institution launched the central Prohari officer portal? Which institution launched the central Prohari officer portal? तो ध्यान सकना नीति आयोग is the correct answer. नीति आयोग is the correct answer. हला नेक्स्ट देखिबा which organization released the world migration report 2026? Which organization released the world migration report 2026? तो ध्यान सकना international organization for migration is the correct answer. International Organization for Migration is the correct answer. Which institution launched the campaign 1 meal a day with millets? Which institution launched the campaign 1 meal a day with millets? तो ध्यान सकना अपना Indian Institute of Millet Research is the correct answer. Indian Institute of Millet Research is the correct answer. Next देखिबा which country launched the project freedom to restore freedom of navigation through the Strait of Hormuz? Which country launched the project freedom to restore freedom of navigation through which Strait of Hormuz? तो ध्यान सकना अपना USA is the correct answer. America is the correct answer. बुझिले तापर मैं आसबे नेक्स्ट को दास आइलैंड that was recently seen in news आपन ये को कंट्री लोकेटेड दास आइलैंड कम पिला बढ़ी बढ़ी चलचंदी हाँ ये की अवस्था है 1.5 घंटा पर पिला आसुचंदी 2 घंटा पर पिला धीरे धीरे आसीबा आरंभ कलेनी कोठी थिले आपण माने हाँ कोठी थिले रही जाइतिले कि हाँ तो दास आइलैंड that was recently seen in news is located in which country? तो कंट्री ना कोन UAE is the correct answer हला who has been appointed as the chairperson by chairman of the प्रसार भारती रो chairperson के मत कोंतु प्रसार भारती रो chairperson के प्रसून जोशी मन पड़ले प्रहलाद जोशी आपनकर कोन मनले प्रहलाद चा प्रधान जी आपनकर रिटायरमेंट नेले हमर रिजाइन करले आ प्रहलाद चा आपनकर मनले कोन आपनकर नो एजुकेशन मिनिस्टर पंचायत सीरीज पूरा को इन्सिडेंस एते हार्ड हबो बोली के भाबी नथिबे हला जय जगन्नाथ आशीष सॉरी आशुष कोन नाम भी तमर मु पढी पारुनी व्हाट इज नेम ऑफ द मास्कट लॉन्च्ड अंडर द कैच द रेन 2026 कैंपेन बाय दिल्ली गवर्नमेंट आपन दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा आपनकर गोटे मास्कट लॉन्च कराई छि कैच द रेन कैंपेन बाय दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा हला कोनटा सेटा नीरो ओके दिल्ली लॉन्च द कैच द रेन 2026 कैंपेन टू प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन देन देखिबा यांकर तो चलिबो जबरदस्ती हो वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च्ड मत कोन दडी आंसर कोन हबो पेड बैच रो क्लास करथुलु आ हेला हो आउ ठीक अछि वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च्ड तो ध्यान सकनाला गैलापागोस आर्किपेलागो इज द करेक्ट आंसर Galapagos archipelago is the correct answer. Next question देखिबा the rusty spotted cat that was recently seen in news is primarily native to which countries? The rusty spotted cat that was recently seen in news is primarily native to which countries? तो ध्यान रखना India, Nepal and Sri Lanka is the correct answer. India, Nepal and Sri Lanka is the correct answer. हैला नेक्स्ट देखिबा Lutjanus arakan a rare species of snapper fish was recently spotted in which state? तो आंसर करना आपन कर देखंतु ओडिशा इज द करेक्ट आंसर ओडिशा हां नारु रानी होची कि नाही कोन करिबा देखि मन रखिबो हला सांबर लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ लोकेटेड इन which state? तो स्टेट ना कना राजस्थान इज द करेक्ट आंसर न्यूज़ रे कोन बदला एनवायरमेंटलिस्ट माने रेज करचंदी कंसर्न
कौन पाई 100 मेगावाट रो जो सोलार पावर प्रोजेक्ट बना होची सांबार लेक रे हला दैट मे डैमेज द फ्राजाइल वेटलैंड इकोसिस्टम का बन कर ये डैमेज करि पारे हला नेक्स्ट देखिबा राजस्थान कथा हम देखिले तापर हम देखिबा रेयर मेडिसिनल मशरूम स्पीसीज छाड़ स्पीसीज छतुटा खाली देखि दबा ए पोको बेले देखा होची हां म छतु बेले देखा होची पोको बेले देखा होची टी हां हो जा भी हो हमर किसी काम नहीं ता संगे वर्ल्ड रेड क्रिसेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे एवरी ईयर वर्ल्ड रेड क्रिसेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे एवरी ईयर May 6 May 7 May 8 May 9 ହେଲା तो आंसर कला May 8 इज द करेक्ट आंसर वर्ल्ड रेड क्रिसेंट डे May 8 रे आपण कर ए वर्ष थीम होची यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी और कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी एंड कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव ହେଲା जियो नेक्स्ट देखिबा वेयर वाज फ्रूट होराइजन 2026 कॉन्फ्रेंस हेल्ड वेयर वाज फ्रूट होराइजन 2026 कॉन्फ्रेंस हेल्ड लखनऊ न्यू दिल्ली भोपाल एंड चंडीगढ़ Where was Fruit Horizon 2026 conference held? एटी आपनकर कोन जे मते कोंतु Lucknow is the correct answer. Fruit Horizon 2026 was organized at ICR Central Institute of Subtropical Horticulture in Lucknow. Next देखिबा सुरु रिवर जोटा रिसेंटली न्यूज रे थला ट्रिब्यूटरी को रिवर रो सुरु रिवर कहार गोटे ट्रिब्यूटरी होची कहार इंडस रिवर रो सुरु रिवर कहार ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर ट्रिब्यूटरी. नेक्स्ट देखिबा Janani initiative was launched by which ministry? Janani initiative launched by which ministry? तो ministry होला Minister of Health and Family Welfare is the correct answer. Minister of Health and Family Welfare launched Janani to strengthen maternal and child health care service in India. हाँ तापर आसीबा which state is the host of 52nd All India Sainik School Principal Conference? Which state is the host of 52nd All India Sainik School Principal Conference? तो आंसर करने ला आपन मते कोंतु केरला महाराष्ट्र तमिलनाडु एंड कर्नाटक तो केरला में इज द करेक्ट आंसर. ऑल इंडिया सैनिक स्कूल रो आपन मानकर कॉन्फ्रेंस देखिया को मिलिथिला कोठी केरलम रो सीएम के गवर्नर के मते कहइबो कि केरलम रो सीएम के गवर्नर के मते कह तो देखिया के जण मन रखिछ तब आगे बढ़िया. प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इज ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री? प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इज ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री? द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इज द करेक्ट आंसर. मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिबा व्हिच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट? Which institution released the report School Education System in India, Temporal Analysis and Policy Roadmap for Quality Enhancement? तो आंसर वाला नीति आयोग is the correct answer. हला नीति आयोग is the correct answer. Next देखिबा which country is the host of World Yogasan Championship 2026? Which country is the host of World Yogasan Championship 2026? तो आंसर वाला इंडिया is the correct answer. World Yogasan Championship 2026 को के होस्ट करछि? इंडिया होस्ट करछि. इंडिया will host the inaugural World Yogasan Championship 4 ରୁ 8 जून 2026 at the Trans Stadia in Ahmedabad with participation from more than 40 countries. Next देखिबा according to National Crime Record Bureau NCRB data which city recorded the highest number of road accident fatalities among the major metropolitan cities? According to National Crime Record Bureau 2024 data which city recorded the highest number of road incidents fatalities among major metropolitan cities? तो आंसर Delhi is the correct answer. Which Indian has been named the South Asia regional winner of the Cambridge Dedicated Teacher Award 2026? कौन आंसर कौन हम? Okay.
Which Indian has been named the South Asia regional winner of the Cambridge Dedicated Teacher Award 2026? Soma Mandal is the correct answer. Soma Mandal is the correct answer. The first international conference on transitioning away from fossil fuels was co-hosted by Colombia and which country? So the answer Netherlands is the correct answer. Netherlands is the correct answer. Next Ashiva. According to 80th round of the National Sample Survey Health Report. According to 80th 80 number round of the National Sample Survey of the Health Report, which state recorded the highest person reporting illness ratio in India? So the answer Kerala is the correct answer. Kerala is the correct answer. World Athletics Day is celebrated every year on which day? World Athletics Day प्रति वर्ष को दिन सेलिब्रेट करा जाए? May 7 रे करा जाए. केबे करा जाए? May 7 रे करा जाए World Athletics Day. The first overseas center for IIT Madras Global Research Foundation has been established in which city? The first overseas center for IIT Madras Global Research Foundation has been established in which city? तो city ना कौन California is the correct answer. California is the correct answer. ठीक अच्छे. Next देखिए. Which department approved viability plan 2.0 for regional rural banks? Which department approved the viability plan 2.0 for regional rural bank RRBs? तो answer वाला Department of Financial Services is the correct answer. Department of Financial Services is the correct answer. Next देखिए. Tara is India's first indigenous glide weapon system. Tara is India's first indigenous glide weapon system designed developed by which institution? Tara. So the answer कौन है? DRDO is the correct answer. DRDO is the correct answer. Tara full form Tactical Advanced Range Augmentation. Tactical Advanced Range Augmentation. Tara. क्या बने ची? DRDO बने ची. Where was India's first international ophthalmology research conference held? कोउठी आपनकर इंडिया रा प्रथम इंटरनेशनल ऑप्थामोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस देखिया को मिलथिला मते कोंतु न्यू दिल्ली चेन्नई हैदराबाद एंड बेंगलुरु. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो आंसर करला आपने न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. हला जोटी की इंडिया रा प्रथम इंटरनेशनल ऑप्थामोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस मीटिंग आपन को देखिया को मिलथिला. हला नेक्स्ट देखिबा. नेक्स्ट कोची व्हाट इज साइफोस्टेमा? व्हाट इज साइफोस्टेमा अनामलाई? व्हाट इज साइफोस्टेमा अनामलाई that was recently seen in news? Newly discovered plant species, a type of fungus, a invasive weed, a type of virus. What is the correct answer? What is Cyphostemma anomali that was recently seen in news? So the answer is newly discovered plant species is the correct answer. According to National Crime Record Bureau 2024 report. According to National Crime Record Bureau 2024 data, which state recorded the highest number of human trafficking cases in the country? मतलब कौन तो आंसर करला तेलंगाना is the correct answer. Very very important. NCRB data कथा पचारुछ. National Crime Record Bureau कथा पचारुछ. को स्टेट हाईएस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस को आपण मानकर कैरी करछ. तो आंसर करला आपण मते कोन तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द IUCN conservation status of the white billed heron that was recently seen in news? IUCN status of the white billed heron that was recently seen in news. तो आंसर करला आपनकर क्रिटिकल एंडेंजर्ड इज द करेक्ट आंसर. बहुत बहुत इंपोर्टेंट. एतले क्रिटिकल एंडेंजर्ड किछि आसीबो आपण मान ताको निहाती मन रखिबो. सेटा आपण मानक पई बाध्यतामूलक किछि ऑप्शन नै. क्रिटिकल एंडेंजर्ड माने मन रखिया पड़िबो. हला कोन कहूछ मु व्हाइट बिलीड हेरन. नेक्स्ट देखिबो टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कोन कहला टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपनकर को स्टेट लोकेटेड? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश. तो आंसर करला महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर. Tipeswar Wildlife Sanctuary recently came into focus after the Nagpur bench of the Bombay High Court sought responses over alleged resort reconstruction. Okay. According to the National Crime Records Bureau 2024, according to the National Crime Record Bureau 2024 report, which state recorded the highest violent crime rate in the country? According to the National Crime Record Bureau 2024 report, which state recorded the highest violent crime in the country? तो आंसर करला ओडिशा इज द करेक्ट आंसर. वायलेंट क्राइम ओडिशा टॉप रे अछि. ओडिशा माने मन रखियार अछि हां कि नहीं? ओडिशा माने मन रखियार अछि. एति के माइंड रखिता फिक्स रखिता भाई. वायलेंट क्राइम रे ओडिशा टॉप रे अछि. कोडी के देखला काको गुली मार दलानी कि काको पूरा वायलेंस टिके अधिका. क्राइम रे वायलेंस टिके अधिका रहउछ ओडिशा रे. हला टिके नाही सबलो अधिका रहउछ. वर्ल्ड थैलेसेमिया डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाय? वर्ल्ड थैलेसेमिया डे प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाय? What is the correct answer?
वर्ल्ड थैलासेमिया डे प्रति वर्ष मे 8 रे ऑब्जर्व करा जाए केबे करा जाए मे 8 रे करा जाए वर्ल्ड थैलासेमिया डे 2026 ऑब्जर्व ऑन 8 मे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द थैलासेमिया एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर यावरी तापीचे टेरिटोरियल कॉरिडोर that was recently seen in news lies along the border of the which two countries यावरी तापीचे टेरिटोरियल कॉरिडोर that was recently seen in news lies along the border of the which two countries तो ध्यान से करना अपन को कोन तो ध्यान से गला अपन करो ब्राजील एंड पेरू इज द करेक्ट आंसर ब्राजील एंड पेरू इज द करेक्ट आंसर ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स ग्रीवेंस रिड्रेसल assessment and index was developed by which department so the answer is department of administrative reform and public grievance is the correct answer department of administrative reform and public grievance is the correct answer Kudankulam nuclear power project is located in which state what is the correct answer Kudankulam nuclear power project located apan कोठी Tamil Nadu located कोठी located Tamil Nadu located next देखिबा Sagar Maitri is collaborative initiative of the Indian Navy and which organization? Sagar Maitri. Sagar Maitri is a collaborative initiative of the Indian Navy and which organization? तो ध्यान से DRDO is the correct answer. DRDO is the correct answer. हेला next देखिबा what is the theme of the World Migratory Bird Day 2026? What is the theme of the World Migratory Bird Day 2026? Theme होच आपनकर every word counts your observation matter every bird count your observation matter आपनकर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे रो थीम कोन every bird counts your observation matter next देखिबा who won the IBSF world billiards championship title 2026 who won the IBSF world billiards championship title 2026 तो ध्यान से करला आपनकर सौरभ कोठारी इज द करेक्ट आंसर कोन हे गला सौरभ कोठारी इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि Anil Fuel recently successfully completed a high bond of irradiation test is named after which Indian nuclear scientist नाटा कौन कहला Anil Fuel कहा ना रही छे आपनकर अनिल काकाडोकर हला प्रोजेक्ट बर्तक इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट बर्तक आपनकर को ऑर्गेनाइजेशन तो एसोसिएटेड बीआरओ बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट बर्तक आपनकर का साथ एसोसिएटेड ब्रो साथ एसोसिएटेड अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 रिपोर्ट देखो वायलेंट रिपोर्ट कथा कहितली क्राइम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कथा कहितली एटी आ गुड रिपोर्ट आसिला अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 रिपोर्ट व्हिच यूटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी अमंग ऑल यूनियन टेरिटरी चोरी रे को यूटी आपनकर टॉप रे अछि चोरी रे को यूटी आपनकर टॉप रे अछि तो आंसर होला दिल्ली इज द करेक्ट आंसर हला दिल्ली इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोची व्हिच रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर लेक चाड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ व्हिच रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर लेक चाड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ नाइजर रिवर नाइल रिवर कोंगो रिवर एंड चारी रिवर व्हिच रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर लेक चाड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ तो ध्यान से गला आपनकर चारी रिवर इज द करेक्ट आंसर चारी रिवर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन कहूची नेक्स्ट कहूची आपनकर ए देखो 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 हला एनएस राज सुब्रमण्य आपनकर न्यू सीडीएस बनिले हला वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन आपनकर नेक्स्ट चीफ आपनकर कृष्ण स्वामीनाथन कोन बनले नेवी चीफ बनिले हला राइट नेक्स्ट एतिक तो कथा थिला कोन द डेरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन व्हिच स्टेट कहि दियो को स्टेट लोकेटेड The Daring Memorial Wildlife Sanctuary is located in which state? The state Arunachal Pradesh is the correct answer. कौन है गला? Arunachal Pradesh is the correct answer. Next देखिए INS सागर ध्वनि was built by which shipyard? INS सागर ध्वनि को shipyard द्वारा build करा है मत को INS सागर ध्वनि अपन मानकर गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स द्वारा एठी अपन बिल्ड करा है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स द्वारा बिल्ड करा है द बाइगा ट्राइब इज प्रिमेनली फाउंड इन व्हिच स्टेट द बाइगा ट्राइब आपनकर को स्टेट मते देखिया मिलछ फाउंड देखिया मिलछ मते कोठी तो बाइगा ट्राइब आपनकर मध्य प्रदेश रे देखिया मिलछ कोठी मध्य प्रदेश रे देखिया मिलछ बाइगा ट्राइब नेक्स्ट देखिबा अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज व्हिच स्टेट सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पंचायत अवार्ड 2025 अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज व्हिच स्टेट सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पंचायत अवार्ड 2025 तो ध्यान से कोन गला कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर वेरी वेरी इंपोर्टेंट
ए क्वेश्चन बहुत अधिक इंपोर्टेंट कहला कि मिनिस्टर पंचायत राज बेसिस रे आपनकर को स्टेट सिक्योर करिछि हाईएस्ट नंबर ऑफ पंचायत अवार्ड 2025 रे तो कोन हेला कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर हला कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अचल इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अचल that was recently seen in news belongs to which class of vessels Indian coast guard ship अचल that was recently seen in news belongs to which class of vessel तो आंसर कोन हेला अदम्य class is the correct answer कोन हेला अदम्य class is the correct answer who has been appointed as the new chief of defense staff in May 2026 who has been appointed as the new chief of defense staff in May 2026 तो आंसर कोन हेला आपनकर INS राजा सुब्रमण्य is the correct answer INS राजा सुब्रमण्य is the correct answer next देखिए ऑलरेडी हम पढ़ी सारले एटा India first functional PM Mitra Park was inaugurated in which state India first functional PM Mitra Park was inaugurated in which state तो आंसर कोन हेला आपनकर तेलंगाना is the correct answer तेलंगाना is the correct answer next देखिबा लाबियो कागे that was recently seen in news belong to which species तो आंसर कोन हेला fish is the correct answer लाबियो कागे which city is the host of 4th India Africa Forum Summit 2026 which city is the host of 4th India Africa Forum Summit 2026 Hyderabad Chennai Mumbai and New Delhi तो आंसर कोन हेला New Delhi is the correct answer New Delhi is the correct answer next देखिबा World Lupus Day is observed annually on which day World Lupus Day प्रति वर्ष को दिन ऑब्जर्व करा जाए what is the correct answer World Lupus Day प्रति वर्ष मई 10 रे ऑब्जर्व करा जाए केबे करा जाए मई 10 रे तो 2026 थीम आपनकर मां के ल्यूपस विजिबल सोमनाथ अमृत पर 2026 कोन कहला सोमनाथ अमृत पर 2026 आपन मानकर सेलिब्रेटेड इन व्हि स्टेट को स्टेट रे आपनकर सेलिब्रेट देखिया को मिले मते कोंतु सोमनाथ अमृत पर 2026 सेलिब्रेटेड इन व्हि स्टेट तो स्टेट ना कोन हला गुजरात इज द करेक्ट आंसर हला गुजरात इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि तापर आगु को बढ़िबा नेक्स्ट कोच आपनकर देखंतु धौ that was recently mentioned in news is a traditional wooden sailing vessel used mainly in which ocean that was recently mentioned in news is a traditional wooden sailing vessel used mainly in which ocean तो आंसर होला Indian Ocean is the correct answer Indian Ocean is the correct answer next देखिबा which country is the host of 2026 Asian weightlifting championship which country is the host of 2026 एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप तो आंसर कोन होला इंडिया इज द करेक्ट आंसर इंडिया इज द करेक्ट आंसर हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन इलेक्टेड फेलो ऑफ द मेट्योरिटिकल सोसाइटी फॉर 2026 हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन इलेक्टेड फेलो ऑफ द मेट्योरिटिकल सोसाइटी फॉर 2026 तो आंसर कोन होला कुलजीत कौर महाराज इज द करेक्ट आंसर कुलजीत कौर महाराज इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा हु ओन द Archibald who won the Archibald Prize 2026 कोन हला रिचर्ड लीवर कोन हला रिचर्ड लीवर नाटा मन रखिथिबे नेक्स्ट देखिबा which state government launched the one time traffic challan settlement scheme 2026 which state government launched one time traffic challan settlement scheme 2026 तो आंसर हला बिहार इज द करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपन को व्हाट इज LHS 3844B what is LHS 3844B that was recently seen in news तो एटा कोन हला exoplanet is the correct answer कोन हेला exoplanet is the correct answer where was the road radar initiative launched to strengthen monitoring of air pollution where was the road radar initiative launched to strengthen monitoring of air pollution तो आंसर कोन हला Delhi is the correct answer कोन हेला Delhi is the correct answer next देखिबा which state has become the top performing state under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 which state has become the top performing state under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 तो आंसर कोन हला आपनकर मते कोंतु को अरे आम राज्य आम ओडिशा तो ओडिशा emerged as the top performing state in house completion under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 हला The second India Aircraft Leasing and Financing Summit 2.0 was inaugurated in which state? The second India Aircraft Leasing and Financing Summit 2.0 was inaugurated in which state? Gujarat, Rajasthan, Tamil Nadu and Kerala. Gujarat,
Rajasthan, Tamil Nadu and Kerala. The second India Aircraft Leasing and Financing Summit 2.0 was inaugurated in which state? Gujarat, Rajasthan, Tamil Nadu, Kerala. So Gujarat is the correct answer. Gujarat is the correct answer. Next देखिए, the 𝐒𝐀 mission is associated with which space organization? The 𝐒𝐀 mission is associated with which space organization? तो ध्यान संग वाला NASA, National Aeronautics Space and Space Administration is the correct answer. NASA. The national 𝐒𝐀 mission is associated with which space organization? Next देखिए, Sabarmati River that was recently seen in news flows through which state? Sabarmati River को state द्वारा अपना फ्लो हुए मत कौन तो? What is the correct answer? हाँ नहीं नहीं सॉरी आउ 4-5 मिनट क्लास रही मो आज 2 घंटा क्लास नेबी 3 मास कर 2 घंटा क्लास नेबी है 2 घंटा क्लास आज नेबी ताठू अधिक क्लास आपन रहिबो नाही आज काना मु किछि अलग अलग वे रे भी आपन एमती सकाळ आपन करंट अफेयर्स कंटेंट ऐड हलानी एबेटू आपन मानकर कोन हो बहुत गुड जिंस नुआ 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 वे आपन देखियो पाए प्रति मास रे आपन करंट अफेयर रिवीजन मु करैबी माने वन स्टॉप सॉल्यूशन आपन को निजे सेल्फ स्टडी किछरा जगह करिया को पड़िबन किछटा जिंस सेल्फ स्टडी करिया को पड़िबन आपन मानको हला आज 2 घंटा क्लास नबा आउ 4-5 मिनट क्लास आपन कर ठीक अछि ना ओके तो साबरमती रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ फ्लोज थ्रू व्हिच स्टेट तो ध्यान से आपन राजस्थान एंड गुजरात इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम तो ध्यान से आपन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा National Technology Day is celebrated every year on which day? National Technology Day. नोट तो निजे करिवो ना नहीं नोट भी करिया दरकार पड़िबो कमे कहलो एते थरा हमें ताको रिवीजन प्रैक्टिस करनै थिबा तुम खाली पीपीटी स्क्रॉल करले सब जिंस मन पड़ी जिवो हमो कथा माने क्वेश्चन देखले मो कथा मन पड़ी जिवो त मानकर बुझि होछि तो दरकार ही पड़िबन त मन को से जिंस ओके नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपन केबे मे 11 नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोन कहूची मु नोट करे नहीं करबा को किसी जगह पड़िबो किंतु आमे जति रिवीजन करबा दरकार पड़िबो ना को ता पई मु किछि प्लान धरि के आसुछ ता पई मु किछि प्लान धरि के आसुछ कथा ता विषय हला जो कर्मचारी इंडिया देखले आपन माने नेक्स्ट देखिबा सेहत मिशन छाडी आपन वेयर वाज द गॉडल लेइंग सेरेमनी फॉर द 4th 5th and 6th एयर क्वेश्चन व्हीकल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड हेल्ड Where was the girdle laying ceremony for the 4th, 5th and 6th air cushion vehicle of the Indian Coast Guard held? So the answer कोन गला आपनकर मते कोन आंसर गला आपनकर गोवा इज द करेक्ट आंसर हला Tristan da Cunha that was recently seen in news is located in which ocean? तो ध्यान से गला आपनकर Atlantic Ocean is the correct answer कोन गला हला किछि किछरा तो नोट करिया पड़िबो यस किछरा नोट करिया पड़िबो नेक्स्ट देखिबा which state government launched deep tech skilling initiative in May 2026 which state government launched deep tech skilling initiative in May 2026 तो ध्यान से आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर हला आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपनकर कोन व्हाट इज क्राइटोडैक्टिलस आपनकर वराडिग्री क्राइटोडैक्टिलस वराडिग्री दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ तो ध्यान से आपनकर ग्राउंड ड्वेलिंग गेको स्पीशीज इज द करेक्ट आंसर ग्राउंड ड्वेलिंग गेको स्पीशीज इज द करेक्ट आंसर According to the recent renewable energy report, what is India's global rank in installed renewable energy capacity? कौन तो आंसर कौन होगा? According to the recent renewable energy report, what is India's global rank in installed renewable energy capacity? तो आंसर कौन ला अपन मते कौन दो? कौन ला ground पूर्वटा कहलो कि ground dwelling eco species कहलो. Third is the correct answer. तो आज क्लास को मैं रखुच्छी 3 मास करेन्ट अफेयर्स को गुड़ा जिन रिविजन कले एगुड़ा एमती नुह कि वन शॉट क्लास नुह एगुड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट किसी क्वेश्चन मुझे नहीं आस वन शॉट क्लास मुझे नहीं आसबि से केवल इंपोर्टेंट क्लास किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही वन शॉट क्लास एबेटू किसी पॉइंट बनूनी कहीं वन शॉट क्लास लास्ट मिनिट रिविजन क्लास रहा दरकार हाँ कि नहीं आउ ये 6 घंटा माराथन में प्लान करूँ मुझे 2 घंटा कहीं सारूँ एवं दरकार ना से आपको समय पढ़ा करेन्ट अफेयर्स को लेकिन पर्टिकुलरली कहूँ कंप्यूटर मुझे ट्राए कली 4 घंटा 5 घंटा जगह टाणी आपंकर है बट अगेन
दिस इज इट आई होप आपण मानक भल लगी क्लास जदि भल लगे ताले सांगे साथी को शेयर करेंगे काली गोटे आसची गोटे सरप्राइज आपण मानक पई सरप्राइज माने रेगुलर जम रहइमो बहुत पिला डिस्काउंट कहते तो काली गोटे आसची है कौन हम धीरे धीरे सब टीचर मैंने तुमको कहे सो या सहित मुझे सेसन को एंड करुच्ची बाकी जो मैंने सुपरपास जॉइन करना मुझे सजेस्ट करी सुपरपास आज ही चेकआउट करनी आपण मैंने सुपरपास जो मैंने जॉइन करना एवं ही सुपरपास जॉइन करनी ये कितने कौन आसीगला एटा कूपन कौन यूज करेंगे 𝐸�ZSPN कूपन यूज करेंगे कौन करेंगे 𝐸�ZSPN सर पेड बैच रे अच्छी मोर क्लास अच्छी कि आज मोर क्लास अच्छी आज लेट मी चेक जदि थी पेड बैच करदे आउ मु शुणी कौन ना बोली शुणी आज कंप्यूटर क्लास नेक्स्ट वीक रू स्टार्ट हो आज के तारीख के आज 28 तारीख ना आज ना काली अच्छी गुरुवार दिन अच्छी 30 तारीख दिन गुरुवार दिन अच्छी है अगस्त जाए आम सारदेवा से हाँ आज ना है कथा पुणी देखा नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट ये सहित रही नमस्कार जय जगन्नाथ जय माँ समले टेक केयर हैव अ गुड डे।